So time to start. Okay. Yesterday we covered up to the prime meridian part. No, sorry, not prime meridian. Sorry, I'm extremely sorry. Tropic of the tropics, basically, right? So content up to tropics is clear. Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn. So what is the relevance of the tropics? One line. It is the, what is the importance of the latitude, the 23.5 degree latitude? Twenty-three and a half degree divides the earth into two halves. Two parts तो ठीक है, half नहीं होगा वो. Very good. It is the, not last, it is the northern, it is the poleward, most poleward latitude up to which we get the sun's perpendicular overhead. Okay. So this is the relevance of tropics. So all the latitudes from equator up to or 0 degree to 23.5 degree, what you call as 23, what you call as the tropic, receive the sunlight at least once in a year, perpendicular overhead. Perpendicular overhead का मतलब क्या है? Perpendicular overhead means something like this. Can you see the difference? What is the difference when the light is perpendicular overhead and when it is slanting? The slanting light is does not make the shadow. नहीं, that's a different thing. But what is, वो तो shadow है. But shadow तो सिर्फ हम, मतलब सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है ना. Shadow बना रहा है. सूरज का काम shadow बनाना थोड़ी है. वो तो ठीक है, वो तो outcome है. Main goal क्या है? Main intensity of the light. ठीक है, intensity of the light is the main thing. Shadow बनाना ना बनाना वो secondary है. ठीक है, जब भी कोई पर्पस या कुछ गोल पूछा है तो आपको पहला मेन चीज बताना है. पेरिफेरल आंसर्स नहीं देने. पेरिफेरल आंसर समझते हो? हाँ, या सेकेंडरी आंसर या थर्ड पॉइंट. सर मेन वाला लास्ट में बताएंगे. वो कई बार लास्ट आता ही नहीं है. तो कहते हैं अच्छा ठीक है, क्वेश्चन चेंज. फिर आप कहते हो सर 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 एक पॉइंट और है सर. ठीक है, तो जो भी मेन पॉइंट है वो शुरू में ही डाल देना एग्जामिनर के सामने. सर ये है मेन चीज. मेंस के आंसर में भी आप लोग लास्ट तक बचा के रखते हो. सर ये वाला तो मेन है ना, लास्ट में दिखाएंगे. वैसा नहीं करना है. ऑलराइट. So what is the relevance of this? When the sunlight is perpendicular overhead, the intensity of the sunlight is maximum, and as you go on inclining the sunlight, the intensity of the sunlight will go on decreasing. Now why does the intensity of the sunlight, or why does the inclination increase or decrease? That you understand from this diagram. देखो, if the earth was a flat surface, right, had the earth been flat, तो हर जगह sunlight would have fallen perpendicular, but because the earth is not flat and it is round, right, so at different locations on the earth the sunlight falls at different angle. ठीक है, if the sun is, so if the earth was, suppose ऐसा आपने बिल्कुल सीधा hold किया है, so where is the sunlight falling? Perpendicular on the ground at the equator. If the earth is not inclined with respect to the sun, then the sunlight will fall perpendicular over the equator. When the northern hemisphere is maximum tilted towards the sun, then the sunlight will fall perpendicular over the Tropic of Cancer. And when the southern hemisphere is maximum tilted toward the sun, Tropic of Capricorn. Can the sunlight fall perpendicular overhead beyond this? No. Okay, so this is the importance. And what is the importance of perpendicular overhead? The perpendicular overhead importance is this thing that you saw. Okay, where the sun is perpendicular overhead, there sunlight will be more intense. Where the sunlight, and intense means it can penetrate more, it will have more heating capacity.
सो सनलाइट से फर्क क्या पड़ता है? सनलाइट गिव्स यू टू थिंग which we broadly are concerned about. There are two parts of the sunlight. There are actually many parts of the sunlight, but two major parts that we are concerned about. As he said, energy and light. So light comes from which part of the sunlight? The visible light. The light coming from the sun has a visible light part, visible light, which you see. And then there is an infrared part. The infrared part brings the heat. So all the heat that you get from the sun comes from the infrared radiation of the sun. All the visibility that you get comes from the VIBGYOR part of the, VIBGYOR सुना है ना, that part of the sun. Then there is a ultraviolet part also. ठीक है, infrared, ultraviolet, बहुत सारा parts होता है sunlight का. But we are concerned about two major. Ultraviolet is mostly blocked by, ये सब सुना होगा ना. These are simple things. अब इतना ग्रो हो गया तो ये तो नहीं बोल सकते नहीं सर ये तो सुना ही नहीं हमने. हम तो बचपन से आईएएस का तैयारी कर रहे हैं सर, हमको ये सब नहीं पता. है ना, सुना तो होगा, राइट. सो व्हाट ब्लॉक्स योर अल्ट्रावायलेट? ओजोन ब्लॉक्स. अगर ओजोन ब्लॉक नहीं करता है तो क्या करते हो? अल्ट्रावायलेट क्रीम लगा लेते हैं सर, वो भी आता है ना मार्केट में. हाँ, यूवी प्रोटेक्शन क्रीम. और चश्मा लगा लेते हैं रेबैन का, यूवी प्रोटेक्टेड है, राइट है, याद आ रहा है? ओके, वेरी गुड. So basically if the sunlight is falling perpendicular overhead, the infrared radiation will also fall perpendicular overhead, because of which region on the earth, which zone on the earth should we expect to receive maximum sunlight? The equatorial and the tropical region. 0 to 10 degree equatorial and tropical region. Tropical is how much? 0 to 5. देखो 0 to 5 to 10 degree को हम equatorial region बोलते हैं. 0 to 5 to 10 is called as equatorial region, and the region beyond that 5 to 10 to up to 23 is called as tropical region. ठीक है, not only 23, we go slightly more beyond, and up to 30 we call it as tropical region. ठीक है. जुपिटर ये हो सकता है मुझे भी चाहिए हो. दोनों क्लास में ज्योग्राफी चल रहा है तो 2 ग्लोब रखो यार. ठीक है, 1 ग्लोब और मंगा लीजिए क्योंकि मुझे भी जरूरत हो सकता है ना. So can you just request them to get another one? All right. So good. So now let us come to the next part of this whole thing. All right. So during which part of the year do we expect the earth to be not inclined with respect to the sun? We did it yesterday. Which two periods of the year? The March equinox and the September equinox. We expect the sun not to be tilted with respect to the earth, not to be tilted with respect to the sun. ठीक है. Now if it is not tilted, then on those 2 days where does the sunlight fall? वो भी हमने कल किया था, over the equator. So how many times in the year does the sunlight fall on the equator perpendicular? Twice a year. ठीक है. Whereas when does the sunlight fall perpendicular over the Tropic of Cancer? Which month? June, around June, 21st June. So how many times in a year? Once. This is also a prelims question. ठीक है, that the sunlight falls perpendicular over the tropics once a year, but over the equator twice a year. ठीक है, आया समझ में? ठीक है, all right. So now the third part, the next part. So once you understand the tropic, now please see here. As you can see in this diagram, यहाँ पे आप देख रहे हैं, we can divide the earth into 2 halves on the basis of the sunlight also. कैसा? आप इसको ऐसा भी कुछ डिवाइड कर सकते हो. ठीक है, राइट. What is this division showing? जैसे आपने पहले पढ़ा था ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर. What is this showing? हाँ, डे हेमिस्फीयर एंड नाइट हेमिस्फीयर. ठीक है, and will it be line or a circle around the earth? This will be a circle around the earth, the whole circle. So the side toward the sun will be day side and the side behind will be night side. Such a circle on the earth we call it as the circle of illumination. ठीक है, तो इस सर्कल को हम क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. ये लिखना है और ड्रॉ भी करना है. ठीक है. सो
सर्कल ऑफ illumination. ठीक है, so this circle is called as circle of illumination. What does the circle of illumination do? Like the circle of equator, what was that doing? Dividing the earth into two equal halves, northern hemisphere and southern hemisphere. So circle of illumination क्या करता है? अर्थ के ऊपर बहुत सारे सर्कल हम बना सकते हैं. What does this do? Divide the earth into the day side and the night side. This is what you have to write. वो लिख लेना है. Circle of illumination divides the earth into day side and night side. ठीक है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डिवाइड द अर्थ इनटू डे साइड एंड नाइट साइड. All right, now once this is clear, now my next question to you is, will the circle of illumination tilt with respect to the sun as the earth tilts, or will it always remain perpendicular or vertical? What do you think? Circle of illumination, should it always remain vertical, and in that the earth will go on tilting, or will that also tilt with the sun? It will not. So the circle of illumination always remains vertical to the orbit of revolution. ठीक है, circle of illumination always remains vertical to the orbit of the revolution, orbit of revolution. ठीक है, ठीक है. now अब हम ये सब बात कर क्यों रहे हैं, अब आप ध्यान से देखो. once you understand that, now please see again here. In this diagram, the previous one that I showed you, you saw that the earth was not tilted, right? तो यहाँ पे भी हम circle of illumination बना सकते हैं ऐसा, right? And as you see here, if the earth is not tilted with respect to the sun, right? Every latitude on the earth, if I go on drawing different latitudes on the earth, every latitude on the earth will go on both the sides of the, or will be equal on both the sides of the circle of illumination. ऐसा, can you see? ऐसा होगा ना? Any latitude that I draw on the earth will be something like this, and latitude means places, क्योंकि हर latitude पे कोई ना कोई place होता है, और every place is on a latitude. ठीक है, so basically when we say latitude, something like this, if the earth is not tilted with respect to the sun, you can see, because every latitude is equally on the day side and the night side, which means every place will also have equal day and equal night. This is why on the equinox day, every place on the earth has equal day and equal night. When the earth is not tilted with respect to the sun, on that day every place on earth will have equal day and equal night, including poles. But वो pole का day night कैसा होगा वो अभी देखेंगे. Do we get it? Right? So I want you to write this also. ये सब एक एक करके point छोटा छोटा लिखते जाओ, because that's how you will further understand. So what happens on the equinox day? On the equinox days, because the earth is not tilted with respect to sun, वो बार बार लिखने की नहीं भी जरूरत है, because you have written it so many times, so you understand that, right? On the equinox day, every place on earth, within bracket every latitude, every place on earth within bracket every latitude, gets equal duration of day and night, get equal duration, 12 hour, equal duration of day and night, 12 hour 12 hour. ठीक है, equal duration of day and night, 12 hour day 12 hour night, right? Whether it is the pole or the equator, right? From pole up to equator, every place will get this. ठीक है, okay, from pole to equator. Now let us tilt the earth. So this was on the equinox. Now let us see what happens on the solstice. Should we solstice पे देखें? So let us take the northern solstice, the northern hemisphere tilted toward the earth, ऐसा इस diagram में. Now, as you can see in this diagram, northern hemisphere is tilted toward the sun, and let me say this yellow line is the axis of, ये कौन सा axis है? Axis of rotation. ठीक है.
So now the latitudes you can see, ऐसा ये सारा latitude है, axis of rotation का perpendicular होता है ना latitude, we learned that yesterday. ठीक है, so these are the latitudes. Now you can see here that the equator is still getting equally divided, 12-hour day. So on solstice also the equator gets 12-hour day, 12-hour night, and on equinox also it gets 12-hour day, 12-hour night, which means round the year, because for the whole 3 month, 3 month, 3 month, 3 month. So round the year the equator gets 12-hour day, 12-hour night. That's the only latitude on the earth which gets equal day, equal night round the year. समझ तो जा रहे हो, बट साथ साथ लिख भी लो ताकि बाद में याद भी रह जाए. Right? So as we can see, even on solstice the equator gets, even on solstice days, as we see, even on solstice days, even on solstice days, the equator receives 12-hour day, 12-hour night. Even on solstice days, the equator gets 12-hour day, 12-hour night. Hence, round the year, equator gets 12-hour day, 12-hour night. ये सब प्रीलिम्स का क्वेश्चन है छोटा छोटा. ठीक है, 12-hour day, 12-hour night. Now let us see look at the other latitudes. What happens at the other latitude? For example, when you go to the tropic, now let us see. On the solstice day, the hemisphere tilted toward the sun. ये दिख रहा है आपको, northern hemisphere is tilted toward the sun. So now if I ask you, when you see the tropic of Cancer, for example, ये वाला, what is happening to the tropic of Cancer? Which part of the tropic of Cancer, or what duration the tropic of Cancer will spend on the day side, and what part it will spend on the night side? Can you see? आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितना ड्यूरेशन इट इज स्पेंडिंग ऑन द डे साइड, इतना, एंड हाउ मच टाइम इट इज स्पेंडिंग ऑन द नाइट साइड. दिख रहा है? नाउ लेट अस गो स्लाइटली मोर poleward, the hemisphere which is tilted toward the sun. Here you can see this latitude gets this much part of day and only this much part of. So as you keep going toward higher latitude in the hemisphere tilted toward the sun, the duration of day goes on increasing या decreasing? India या Delhi? I is increasing, D is decreasing. क्योंकि आप लोग जब increasing decreasing बोलते हो तो मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आता है. Increasing India है ना? I hope everyone agrees. Now if you just go on doing this, at what latitude will you get a 24-hour day? On the solstice day. Not pole. Not pole. वो ध्यान से देखो और मैथ्स लगाना है, इसमें मैथ्स है, सिंपल मैथ्स. Above why? Can you see that 66 and a half circle? 66 and a half circle. Is it going on the night side? No. It is going up to the circle of illumination, and then again on the other side it is coming back. Yes or no? So this white line that I'll draw, whitish line, यहाँ पे, this white line is remaining throughout the day, 24 hours, it remaining on the day side. वो night side तो जा ही नहीं रहा है. So any location on that latitude will also never go on the night side. On which day? On that solstice where the hemisphere is tilted toward. So is it pole or 66 and a half? 66 and a half. And if I say any other higher latitude than 66 and a half, what will be the case for them? थोड़ा सा उसको ऊपर ले लो, ये वाला या ये वाला या ये वाला या ये वाला या पोल. All of them will be same, which means all of them will experience 24-hour day. आया समझ में? So now tell me, which latitude starts experiencing 24-hour day on the solstice? Pole, latitudes between pole and 66, or 66 and a half? Only 66 and a half, only 66 and a half and higher latitudes. आंसर क्या है? 66 and a half and higher latitude. वो ऐसा ऑप्शंस देंगे आपको.
ठीक है, 66 ओनली, 66 एंड 90, और पोल लिख देंगे, 90 लिखेंगे तो समझ में आना आसान है, तो इसलिए कंफ्यूज करने के लिए 66 एंड 90, बीच का नहीं लिखेंगे, द वंस बिटवीन देम, राइट, और दिस एंड हायर. So the answer is 66 and higher. All the latitudes will experience same. ठीक है, what is that phenomena? What do you call? What same क्या मतलब क्या दिखेगा उनको? Same day, 24. Same day तो सबके लिए है, 24-hour day. ठीक है, 24-hour day. And this phenomena of 24-hour day is a phenomena observed normally where? Pole. Hence we call this circle as polar circle. Why do we call it as polar circle? Why? Because once you are in any place in that circle, ठीक है, उस सर्कल में आप कहीं पे भी जाओगे, at least once in a year. Which day? Solstice day. At least. ठीक है, you will find a 24-hour, which means for 24-hour you will be able to see the sun in the sky. ठीक है, so such places which are in such a circle are called as polar region. And such a circle is called as polar circle. And what is the latitude of that circle? 66.5. अब समझ में आया why do we call that 66.5 as the polar circle? And the one which is close to Arctic we call it as Arctic circle. The one which is close to Antarctic you call it as Antarctic circle. But दोनों का common name क्या है? Polar circle. जैसा कि tropics का common name क्या है? Tropical or tropical circle or whatever. ठीक है? Do we understand this? So what is the इंपॉर्टेंस ऑफ 66.5 डिग्री? जैसे आपने 23.5 का इंपॉर्टेंस बताया था, जैसा वहां बताया था ना, इट इज द मैक्सिमम लैटिट्यूड अप टू विच द सनलाइट रीचेस परपेंडिकुलर ओवरहेड, ऐसा ही कुछ बोला था ना, मैक्सिमम लैटिट्यूड अप टू विच द सनलाइट रीचेस परपेंडिकुलर ओवरहेड एटलीस्ट वंस इन अ ईयर. यहां पे क्या बोलेंगे? व्हाट इज पोलर सर्कल? इट इज द, ये मैक्सिमम मिनिमम में बात करो यार, मिनिमम लैटिट्यूड अप टू विच, आया समझ में? सो पोलर सर्कल और 66.5 इज द मिनिमम लैटिट्यूड अप टू विच द सनलाइट विल बी will be 24 hours at least once in a year, at least once in a year. ठीक है, सो ये भी लिख लें, राइट? सो राइट डाउन, राइट? सो 66.5 डिग्री लैटिट्यूड, 66.5 डिग्री लैटिट्यूड on the solstice day, experiences 24-hour day, 24-hour day for the hemisphere tilted toward the sun, 24-hour day for the hemisphere tilted toward the sun, comma, whereas for the hemisphere tilted away from the sun, look at the board and tell me what should it be? For the hemisphere tilted away from the sun, 24-hour night, 24-hour night. Cool, sir. Similarly, all the places within the polar circle, not on the polar circle. On का मतलब on that latitude, within मतलब that latitude and higher latitudes. ठीक है, अगर आप पोलर सर्कल का अंदर का रीजन देखोगे तो यू आर सीइंग पोल आल्सो, राइट? सो विदिन का मतलब क्या हुआ? ऑल द प्लेसेस विच आर ईदर 66 और हायर लैटिट्यूड. ठीक है, ऑल द प्लेसेस विदिन द पोलर सर्कल, all the places within the polar circle also experience 24-hour day or 24-hour night, 24-hour day or 24-hour night for at least once a year. At least once a year, not once a year, at least once a year. ठीक है, at least once a year, and hence they are known as polar region. That is known as polar region. Okay,
क्लियर है? नाउ इतना समझ में आ गया तो अब अगला चीज भी देख लेते हैं. लेट अस सी. यहां आइए, come to this diagram, right? And let me copy this, let me paste it here, and let me see in case I can clear this thing mess. Yes, I can. Okay, अभी ध्यान से देखो इधर, all of you, ठीक है? Because you have to give me the answer. Please see here, on this equinox, March equinox, ये दिख रहा है ना? March equinox. On March equinox, is the North Pole getting 24-hour light? North Pole, is it getting light? It is getting light. You can see light आ रहा है ना? Maybe not for 24 hour, जो आप बोलना चाह रहे हैं, but it is getting, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा कि वो डे भी एक्सपीरियंस करता है और नाइट भी. So it is getting light. Which date? March, whatever, right? Then after 3 months, is the North Pole getting light? 24 hours? Yes, sir. On 24 September or September equinox, is it getting sunlight? It is getting sunlight. ठीक है ना? For how long? देखते हैं, you know, because you are not clear, क्योंकि अभी तो सर आपने 12 hour लिखवाया है. Now tell me, what will it experience here? Will it experience 24-hour day? Right? And a day before and a day later? 24-hour day. And starting from this day itself, it will start experiencing, because on this day, what is the tilt? On this day, what is the tilt of the 0? And a day later, northern hemisphere, थोड़ा ज्यादा होगा. So अगर थोड़ा ज्यादा होगा, and that's a point location, just imagine in this diagram, इस वाला में, ठीक है? तो अगर थोड़ा सा ज्यादा टिल्ट आपने कर भी दिया इसमें, right? So rather than this yellow line being 23.5 degree, let us say it is 1 degree. So that 1 degree location, will it remain on the day side or night side? Day side. So from the very next day, it will be 24-hour day, है ना? So 21st March के बाद 22nd March will be 24-hour day, and up to June it will be 24-hour day, and up to 20th of September it will be 24-hour day, and then on 21st, whatever we have to see. ठीक है? So if you just go on adding all of this, starting from 22nd of March till 20th of September, it is 24-hour day. 6 महीना हो गया नियरली. 6 month minus 2 days, वो 2 month days का हमें देखना है क्या हो रहा है. And so 6 month minus 2 days, it is 24-hour day. Leave those 2 days and then go on the other side. Again for another 6 months, night. ठीक है ना? So पोल का डे एंड नाइट 1 year का हो गया. 6 month डे, 6 month नाइट, है ना? तो आपका हिसाब से तो वो 1 year का कॉन्सेप्ट हो गया ना? आ रहा है समझ में? So now imagine this whole cycle as a day, 1 day. 6 month afternoon, 6 month night. So what is happening on those 2 days? Solstice वाला, equinox वाला दिन पे क्या हो रहा है? It is like, very good, थोड़ा सा तेज बोलो, evening और morning. When you make the transition, जैसे आपने कल पढ़ा था ना, when you make the transition from winter to summer, you get autumn. जल्दीबाजी में आंसर नहीं देना है. When you move the transition from summer to winter, autumn, and winter to summer, spring. उसी तरह से when you move from day to night, in between what do you get? Evening. And when you move from night to day, so now apply all that. अब यहां पे सोचो कि इसमें क्या होना चाहिए, right? Because so on 21st March, northern hemisphere is transiting from what to what? Night to day or day to night? So it should be on 21st March, it should be like morning. Morning में आपको क्या दिखता है स्काई में? सर उठते ही नहीं हम. ये सब क्या सवाल है सर? मॉर्निंग में क्या दिखता है? आईएएस का तैयारी करें, आपको पता नहीं है? इतना सुबह कौन उठता है ना? तो क्या दिखता है आपको? कहां दिखता है? ऑन द होराइजन, है ना? ऑन द होराइजन, हाफ सन अप, हाफ सन डाउन. देखा है? हाफ हाफ, है ना? So on 21st March, if you are standing on the pole, what will you see? Sun on the
फॉर हाउ लॉन्ग? 1 होल डे. उसी को हम 12 आवर डे 12 आवर नाइट बोल रहे हैं, क्योंकि हाफ द सन इज अप, हाफ द सन इज डाउन. ठीक है, तो वो मॉर्निंग है, राइट? इट इज नॉट हाफ डे हाफ नाइट. द होल डे यू विल एक्सपीरियंस मॉर्निंग. पूरा दिन वो मॉर्निंग ही रहेगा. तो पूरा दिन आप 3-4 बार ब्रेकफास्ट खा सकते हो, ठीक है, और ब्रश जितना बार चाहो कर लो, आपका मर्जी है. ठीक, डू यू गेट इट? सेम वे व्हाट विल यू एक्सपीरियंस ऑन 21 सितंबर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए? फ्रॉम डे टू नाइट, है ना? तो उसको क्या बोलेंगे? इवनिंग लाइक. सो दैट होल डे ऑन दैट प्लेस यू विल एक्सपीरियंस इवनिंग. उसी को हम बोल देते हैं हाफ डे, बट वो हाफ डे हाफ नाइट है नहीं एक्चुअली, राइट? इट इज हाफ सन अप हाफ सन डाउन. डू वी गेट इट? इज दिस क्लियर? एंड फ्रॉम नेक्स्ट डे, तो यहां पे क्या होगा? मार्च वाला साइड में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हाफ सन अप, नेक्स्ट डे स्लाइटली मोर अप, next day slightly more up, then gradually it will go on going up and up and up, and by 21st June it will be highest. Overhead hoga? Will it go perpendicular overhead? No, never. How high will it go? 23.5. In the sky it will only go by that much. That is your maths calculation. So in the sky it will go only up by 23.5. Uske baad from June 21st again it will start going down. Till when? 21st September. On 21st September वो फिर हाफ हाफ हो जाएगा, and then after that further down, and then next 6 months no sun. Do we understand this? आ रहा है समझ में? So this is what you call as equinox का half day half night. That is actually like morning or evening. ठीक है? When it is the sun is half on the not half actually, when the sun is about to rise and there is sunlight but no sun, ठीक है, उस पीरियड को हम जब हम when in the sky you don't see the sun but you see the sunlight, you call that period as twilight. उसका वर्ड है twilight. जीसी लियोंग में रॉन्ग दिया हुआ है, उन्होंने सिर्फ इवनिंग को twilight लिखा है, बट twilight is not only evening. Twilight is the period when there is no sun but sunlight is there, and that happens twice in a day, before morning and after evening. वो दोनों टाइम होता है, राइट? जस्ट बिफोर सनराइज एंड जस्ट आफ्टर सनसेट यू गेट ट्विलाइट. अब वो ट्विलाइट भी दो टाइप का है. मॉर्निंग ट्विलाइट वी कॉल इट एज डॉन, एंड इवनिंग ट्विलाइट वी कॉल इट एज डस्क. है समझ में? सो डस्क एंड डॉन क्या है? डॉन इज मॉर्निंग ट्विलाइट, डस्क इज इवनिंग ट्विलाइट. एंड व्हाट इज ट्विलाइट? When the sun has just set or just about to rise, the sunlight in the sky is called as twilight period. वो मूवी सीरीज वो सब देखा होगा आपने, है ना? फॉक्स में टर्न होता रहता है, क्या क्या देखा है? हाँ सर, बिल्कुल देखा है सर हमने. तो आप लोग को तो मूवी का ही भाषा में सिखाना पड़ेगा. तो अभी समझ में आया? ऑलराइट. सो शुड वी गो बियॉन्ड दिस? आगे बढ़े इसके, राइट? सो शुड वी राइट? ये लिख लें. तो 12 आवर डे 12 आवर नाइट तो आपको समझ में आ गया. But on the pole, so if I ask you now, which period will receive 6-month day or 6-month night? Pole. And which latitude will receive 1 day 24-hour day and 1 day 24-hour night? 66. So बीच वालों के साथ क्या होगा? 66.5 is getting 1 day and 90 degree is getting 6 month. So what about, for example, 70 डिग्री? समवेयर इन बिटवीन, है ना? तो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए 1 डे से. सो नाउ इफ आई आस्क यू विच ऑफ द लैटिट्यूड विल हैव अ लॉन्गर 24 आवर डे और 24 आवर नाइट, 70 डिग्री और 80 डिग्री? ध्यान से सुनो, मैंने 90 डिग्री बोला ही नहीं. 70 और 80? 80 डिग्री. 80 डिग्री माइट हैव 3-4 months. 70 डिग्री विल हैव फॉर 10-15 days. आ रहा है समझ में? दिस इज द डिफरेंस. So pole has 6 month, polar circle has 1 day, and region within have in between. Higher the latitude, more number of days of 24-hour day or 24-hour night. ठीक है, आया समझ में? क्लियर? राइट. सो ये लिख लें थोड़ा. यस. सो राइट डाउन. आई थिंक लास्ट थिंग क्या लिखा है हमने? polar region. Right now, within that, write down below that next paragraph. The polar region experiences
the polar region experiences a 24-hour day or 24-hour night. Polar region experiences 24-hour day or 24-hour night ranging from one day on 66.5 degree latitude, ranging from one day on 66.5 degree latitude to up to kitna 6 months, where on 90 degree latitude, up to 6 months on 90 degree latitude, and all the in between places for up to 6 months on 90 degree latitude, and all in between places for varying intermediate periods. All the in between places will experience for all the in between places will experience for varying, varying, varying in between periods or intermediate periods, varying intermediate periods. ठीक है? I hope you understood क्या लिखा है आपने, राइट? सो अभी इधर देखिए, यहां देखो ध्यान से. नाउ प्लीज टेल मी दिस पोजीशन विच प्लेस विल एक्सपीरियंस 24-hour डे, बोल सकते हैं. Which place will start experiencing 24-hour day on this day? नंबर चाहिए मुझे लैटिट्यूड में. हाँ 66 एंड अबव के लिए यहां से स्टार्ट हो जाएगा. On this day I am asking. This is March equinox. On March equinox, which day will start experiencing something like 24 hour of sunlight or sun? Only 90 degree. ठीक है? So starting from 21st March, northern hemisphere will start experiencing 24 hour of day in the sky, maybe morning sun, but something like sun. And then for the next 3 months, on 21st June up to 66. Only on this day 66 we'll see, for no other day. And then again 90. So 6 months of day on the pole is between which to which period? Equinox to equinox. The 6 month day or 6 month night on the pole is equinox to equinox. It is not solstice to solstice. ये भी prelims question है. Right? The pole will experience 6 month day or 6 month night for which period? They will give you answers, solstice to solstice, or they might ask northern north pole will experience, and then they will give you 4 options: March equinox to September equinox, September equinox to March equinox. आ रहे समझ में? This solstice to that, वो confuse करेंगे आपको, but you have to be clear. So you have to think कि कौन सा रीजन के लिए बोल रहे हैं, which period. This is that smart question. ठीक है? Do we get it? Right? So because they have started asking questions around the movement of the earth, that's why I'm focusing here, ताकि आपको थोड़ा clear हो. And once you understand this, आपको climate भी समझ में आ जाएगा. Which region should have longer days, which region should have shorter days. क्योंकि climate सारा इसी पे depend करता है. Alright? So now please see here. अभी इस diagram पे फिर से आ जाओ, नीचे वाला diagram. In this diagram, if I ask you, ठीक है, that ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, ठीक है. नाउ and this is the latitude. Let me draw it in equator. ये रहा, थोड़ा सा thicker line बना देते हैं. This is the equator, ठीक है. So which hemisphere, when the northern hemisphere is tilted toward the sun, which hemisphere is receiving more part of the sunlight? वो डायग्राम में दिख रहा है आपको. Northern hemisphere is receiving more part of the total sunlight. कितना total sunlight है, कितना यहां से लेके यहां तक, and northern hemisphere is receiving almost this chunk of the whole thing. ये पूरा का पूरा जो पाई है, you can see half of it is dark, half is
and out of this much is northern hemisphere. ये सारा तो northern hemisphere है यहाँ से यहाँ तक. So this much of the sunlight northern hemisphere is taking, and how much of the sunlight is going to the southern hemisphere? A small pie. So which hemisphere will be warmer? That's why this is one reason why northern hemisphere experiences summer, because it receives more part of the sunlight and this receives less part of the sunlight. So if you at your home you have two burners gas के ऊपर, एक छोटा burner एक बड़ा burner है ना. So which is the bigger burner here? Northern hemisphere. Which is the smaller burner? Southern hemisphere. This is why one reason why if you put the same amount of container, so the bigger burner food will cook faster and the smaller burner will cook slower, because it is receiving more sunlight, this is receiving less sunlight. This is one reason. The second reason is also there. What is the second reason? Please see here. Which hemisphere is getting the sunlight for longer duration? Why? Because the days are longer in the northern hemisphere. Which hemisphere is getting it for the shorter duration? Southern. So one, the burners are of different size. Second, they are on for different times. Bigger burner is on for longer and the smaller burner is on for shorter. तो कहाँ ज्यादा गर्मी होगा? You understand? है ना? तो एक तो बर्नर बड़े छोटे हैं और दूसरा उनका ड्यूरेशन भी अलग अलग है. Winter region the burner is on for less time, less than 12 hours, and summer region on for more than 12 hours. So obviously the northern hemisphere will have more heat, right? So what is causing the seasons here? Because of the tilt of the earth, the amount of sunlight received, the intensity of sunlight, and the duration of sunlight, all the three cumulatively give you seasons. ठीक है, intensity क्योंकि angle change हो रहा है, right? You can see northern hemisphere is getting more perpendicular, southern hemisphere में तो perpendicular है ही नहीं. So one, the intensity is different. Second, amount is different. Third, duration is also different. So जब तीनों चीजें ही होंगी, right? So obviously northern hemisphere will be warmer in June and southern hemisphere will be cooler, and opposite in December. Is this clear? So do you understand the reason for the seasons? For example, they ask you these questions. We get seasons due to Earth's revolution on the orbit, around the sun. Earth revolution on a tilted axis. ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why do we have summer? So then they will give you all these 3-4 reasons and they will ask you pick all the relevant. So 1 only, 1 2 only, 1 2 3 only. तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा है. Is this okay? So ये भी लिख दे. Should we? डाउट है तो पूछो यार. आज सुबह से आप लोग के चेहरे पे थोड़ा थोड़ा डाउट दिख रहा है मुझे. कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा ना? पक्का? नहीं, उससे क्यों पूछना है? आप अपना आंसर खुद दो. क्लियर है? पक्का? एवरीवन? चलो लिख डालें फिर. कुछ स्पीड तेज है मेरा आज, स्लो है, मॉडरेट है? हाँ जी. Antarctic is larger in size. नहीं, Antarctic is larger because the continent is bigger. ठीक है, वो कॉन्टिनेंट ही बड़ा है. मतलब आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया कि सर इसी वजह से एशिया बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया छोटा. इसका लॉजिक तो नहीं होगा ना. समझ रहे हो? वो तो कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन है. Antarctic ice you might ask me, but Antarctic ice is more because of continentality, not because of this. Because both the hemisphere get equal amount of sunlight in different seasons. ठीक है, वो ice ज्यादा जरूर है वहां पे, वो continentality का वजह से. Okay, so write down that as we see that during the solstice period, ठीक है, hemisphere tilted toward the sun receives sunlight with one more intensity. तीनों पार्ट लिखना है. Receives sunlight with
more intensity. Why is that more intensity? Because angle of incidence is perpendicular or high. ठीक है, because angle of incidence of sunlight, more intensity because angle of incidence of sunlight. Receive sunlight with more intensity because angle of incidence of sunlight is perpendicular or high. Angle of incidence of sunlight is perpendicular or high. ठीक है. Two longer duration or longer day. ठीक है, longer duration, longer day, and hence overall, and hence so intensity ज्यादा है और duration ज्यादा है, hence overall larger amount of sunlight, hence overall larger amount of sunlight, larger amount of sunlight as compared to the hemisphere, as compared to the hemisphere tilted away from the sun, as compared to the hemisphere tilted away from the sun, which experiences what season? Winter season. ठीक है, done. So you understand why you get winter and summer. Why is this happening? Because of Earth's revolution on a tilted axis. ठीक है, so this is mostly happening because of Earth's revolution on, not mostly, it is happening because of Earth's revolution on a tilted axis. ठीक है, so all of this is because of Earth's revolution on a tilted axis. Clear है? आगे बढ़े, right? If you want to write that last line also. All of this is because of Earth's revolution on a tilted axis. Now let us come to, so we understand all of this and now we come to longitudes. So latitude वाला part हमारा complete हो गया, rotation, ठीक है. So now let us come to बार-बार rotation बोल रहा हूँ. Revolution part is over. So revolution, now we come to rotation of the earth. ठीक है, so revolution का इतना रोल है, ठीक है. Now rotation of the earth. So what does the rotation of the earth do? Let us see. See, if you see the sun in the polar region, it would look in the sky something like this. For 12 hours, if you see, ठीक है, it will move from one place और 12 घंटे तक वो ऐसा ऐसा घूमता रहेगा. It will not go up or down. ठीक है, तो अगर पोल पे आप खड़े हैं, पोल का पास में कहीं, और वहां पे सन देख रहे हैं स्काई में, तो ऐसा बस घूमते रहोगे पूरा दिन में. ठीक है, और 24 घंटे बाद इधर से घूम के वापस इधर खड़ा और सन उधर जा रहा है. ऐसा is very different from what you have ever experienced. अरे समझ में, right? So this is how the sun moves. Now let us come to latitudes. Sorry, as I said, revolution of the earth. So ये rotation revolution मुझे डुबाएगा. No problem, करते हैं कुछ इसका भी. Okay, so let us talk of, finally मुझे सोचने दो क्या बोलना है. Rotation of the earth. ठीक है, so rotation is happening this way. Clear? ऐसा, right? And we know the latitudes also. Latitude भी clear है. Now the question is, how much time does the earth take for doing a rotation? Before that, I'll ask you a situation. आप लोग को स्कूल में कोई पनिशमेंट मिला है बचपन में, that there was this sports teacher, right? And he asked you, अच्छा लेट आए हो, जाओ पहले चक्कर मार के आओ. How many of you have got this punishment? You understand that चक्कर? Right? So let us say the sports teacher was standing at some place and he asked, चक्कर मार के आओ. ठीक है, चक्कर मार के वापस मेरे पास आओ. You go running. आप पूरा चक्कर मारे, वापस आ गए जहां पे सर था, बट सर अब वहां नहीं है. ऐसा भी हुआ है. The sir might have gone somewhere else. वो थोड़ा आगे चले गए. Right? So then what do you have to do to reach the sir? You have to keep running up to the sir. Yes or no? So चक्कर मार के आओ और चक्कर मार के मेरे पास आओ.
ये दोनों दो अलग चीजें हैं, राइट? गो एंड वन डू वन राउंड एंड कम टू मी आर टू डिफरेंट थिंग्स. When you do one round, you are doing one round of the ground. When you do one round and reach the sir, you do the ground plus the additional distance that the sir has run. ठीक है? Then you have done one round with respect to sir. These are two. So in which case you have to run more? When you have to run to the sir. The earth also has same ways two rotation. नहीं सर नहीं, सर एक ही है उनका. ठीक है? मतलब देखो आप लोग इतना इमर्स्ड हो जाते हो सिचुएशन में कि वर्चुअल वाला रियलिटी में इतना ज्यादा डूब चुके होते हो कि आप भूल जाते हो कि सर देखना है या सन देखना है. परफेक्टली फाइन, ठीक है, चलो होना चाहिए. Right? So good. So let us come back. So basically the same thing happens with the earth also. How? Let us see. देखो, this is sun. This is the orbit. ठीक है? Now this is the orbit. Now let us say the earth starts from position A. ठीक है? And the earth is doing a revolution. ये exactly ground वाला situation नहीं है, but that will help you understand this. ठीक है? So the earth is doing a revolution, which means the earth is going around the sun like this, and at the same time the earth also has to do a rotation. ठीक है? So when the earth has to do a rotation, let us say it was at location A, right? And the earth was like this. I'll draw a slightly bigger earth. ऐसा. ठीक है? And let me draw a line up to the sun, and let us take place 1 on the earth, and this place 1 is doing a rotation. ठीक है? मतलब इस डायरेक्शन में नहीं, इसको दूसरा डायरेक्शन में, ऐसा वेस्ट टू ईस्ट. So this is a place Delhi, and Delhi has to do a complete rotation, and then it has to come back. Then one day will be over. तभी होता है ना one day. We say one day is over when one complete rotation is there. So suppose this place is Delhi 1, and then Delhi has to do one rotation and it has to come back. So when Delhi has to do one complete rotation and come back, it has to come back to this location first. Then the rotation is over. How much time does the earth take to do this one? How much angle is this? Absolute value 360. So for 360 degree rotation, how much time does the earth take? 20. 23 hour 56 minute 4 second only for 360 degree. This is like reaching the place where sir started from, जहां वो आपको पनिशमेंट देके गए थे. ठीक है? तो वहां तक रीच करने में takes how much time? This much. But by that time the earth itself has revolved, which means the earth is no more at location A. Where is the earth now? Somewhere along this line, because earth has revolved also. तो एक दिन में तो थोड़ा आगे निकल गया है. So earth has now come here. So by coming back to position 1, is the rotation with respect to the sun also complete? Is the place 1 in front of sun? ये ध्यान से देखो. Is the place 1 after doing a 360 degree rotation, is it in front of 1? Why? It has to do this much extra so that it is in line of sun. अरे समझ में? In line of sun, you understand? Right? So that the same place experiences same thing. जैसा उसने पिछली बार experience किया था. If the sun was here, next day also it should be, right? If the sun is there, then you have not done a complete rotation. Right? You have to do a complete rotation back to the same position of the sun. So for doing this, how much more time does it take? All that addition, difference between 24 and 23. वो difference ये है. So how much time does the earth take to do a complete rotation with respect to the sun? 24 hours. And with respect to 360 degree, absolute? This is why we have two rotation durations. आपका बुक में दिया हुआ है ना, कहीं पे लिखा हुआ है, विजन का हैंडआउट में या कहीं मिलेगा.
ठीक है. So for absolute rotation of 360, 23, 56, 4 seconds. For one complete rotation with respect to sun, 24 hours. This is what you call your solar day. ठीक है, ये हमारा सोलर डे है. और वो जो 23 वाला था वो स्टार के हिसाब से. With respect to any other star, it is only 23 hours, 56 minutes, 4 seconds. Is this okay? Right? Good. So, should we write this? ये ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर लो and then write. वो है कितना कितना बच गया? 3 minutes 56 seconds. हाँ जी. वो टाइम 1 से 2 पे आने में लगेगा. 1 से 2 उतना और रोटेट करना पड़ेगा. जब वो 2 पे आ जाएगा तब वो सन का लाइन में आ गया. ठीक है. सो दिस इज दैट एडिशनल टाइम. एडिशनल टाइम 1 to 2 टाइम 3 minutes 56 seconds. ठीक है. एंड 1 to 1. ठीक है. तो 1 को 1 डैश कर दें ताकि थोड़ा सा समझ में आए, है ना. एंड 1 डैश टू 2. 3 अलग अलग पोजिशन हो गया थोड़ा तो आपको क्लियर हो जाएगा. राइट. सो 1 to 1 dash is 360 degree. Any other star, because with respect to stars we are not revolving ना. फॉर एग्जाम्पल पोलारिस, वो तो बहुत दूर है, उसके हिसाब से आप थोड़ी रिवॉल्व कर रहे हो. ठीक है. तो उसके हिसाब से बोल सकते हो. और फार्दर द स्टार मोर एक्यूरेट इट बिकम्स, क्योंकि दूसरा स्टार के हिसाब से वी आर नॉट रिवॉल्विंग. रिवॉल्व का मतलब उसके अराउंड जाना है ना. तो हम किसी स्टार के अराउंड तो जाते नहीं है. स्टार के हिसाब से तो हम यहीं पे मान लो अगर मैं यहीं गोल गोल चक्कर काटता हूं, कोई मुझे बहुत दूर से देखेगा तो उसके हिसाब से मैं चक्कर थोड़ी काट रहा हूं. मैं तो फिक्स्ड हूं. ठीक है. ऑल राइट. डन. सो शुड वी राइट? लिख लें. राइट डाउन. as we see the earth for doing a 24 sorry the earth for doing a exact 360 degree rotation, the earth for doing exact 360 degree rotation takes 23 hours, 56 minutes, 56 minutes and 4 seconds. And 4 seconds. ठीक है. But in the same time, we call it as sidereal rotation. इसका नाम है sidereal, SIDEREAL. एक ही वर्ड है, sidereal rotation, known as sidereal rotation. That is with respect to any star. Sidereal rotation, which is with respect to any star. Right? We call it as sidereal rotation. बोलो बोलो क्या डाउट है? हाँ, I'm just completing. Can one of you read? आप पढ़ो. Sir, as we see, the Earth for doing an exact 360 rotation takes 23 hours 56 minutes 4 seconds. But in
the same time. या बट इन द सेम टाइम, वो साइड रियल रोटेशन है वो तो हो गया, बट इन द सेम टाइम द अर्थ, बट इन द सेम टाइम द अर्थ ऑल्सो revolves around the sun. In the same time, the earth also revolves around the sun and has shifted its position, with respect to sun, shifted its position with respect to sun on the orbit of revolution. Shifted its position with respect to sun on the orbit of revolution, within bracket A to B, within bracket A to B as per diagram. Hence even after a 360-degree rotation, even after a absolute 360-degree rotation, even after a absolute 360-degree rotation, the location has come from, the location has rotated from 1 to 1 dash. I'm talking in terms of the diagram. The location has rotated from 1 to 1 dash, right? And the location 1 dash, is still not in front of the sun. Location 1 dash is still not in front of the sun. What is the location in front of the sun? Within bracket location 2. Still not in front of the sun, within bracket location 2. ठीक है? Hence for traveling from 1 dash to 2, hence for traveling from 1 dash to 2, hence for traveling from 1 dash to 2, it takes a additional 3 minutes and 56 seconds. 3 minutes and 56 seconds. Hence the total 24 hours. ठीक है? Hence the total becomes 24 hours, which is the solar day. So solar day हमारा कितना होता है? 24 hours. ठीक है? Solar day. Is that okay? Clear? Now please listen to my question. हाँ जी, बोलो. हाँ, डायग्राम समझ नहीं आया? फिर से समझाऊं? हाँ, रोटेशन ये वाला एक्सिस पे हो रहा है, तो मान लो ये लोकेशन है, ऐसा देखो, अभी समझो, ठीक है? यहाँ पे है 1 पे है, मान लो कोई आप यहाँ 1 पे खड़े हो, तो आप पूरा रोटेशन करके कब आओगे? जब ये पूरा ऐसा घूम के जाओगे और 1 पे वापस आ जाओगे. तो आपने तो ये करने का कोशिश किया, अर्थ पूरा रोटेट कर गया 360 और आप 1 पे आ गए. लेकिन जब तक आप 1 पे आए तब तक अर्थ रिवॉल्व करके आगे जा चुका है, तो अर्थ तो यहां आ गया. तो आप रोटेट करके जब आ रहे हो तो आप यहां पहुंचोगे 1 डैश पे, है ना? और जो लोकेशन अब सन के, अगर अर्थ के सेंटर से सन को लाइन खींचें तो ये वाला लाइन तो 1 से पास हो रहा है, लेकिन अर्थ के सेंटर से सन को लाइन खींचोगे तो ये लाइन तो 2 से पास हो रहा है. इसका मतलब जब तक आप 2 पे नहीं पहुंचोगे तब तक आपने सन के हिसाब से पूरा रोटेशन नहीं किया. नहीं, टू एंड फ्रो नहीं हो रहा है, ऐसा समझो. चलो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं. यार वो ग्लोब भी ले गए, कोई बात नहीं, ग्लोब का भी जरूरत नहीं है. ऐसा देखो, ये लाइट आपको दिख रहा है, मान लो मैं अर्थ हूं, ठीक है, और ये रोटेट हो रहा है और आप सन हो, आपके एकदम ये लाइट सामने है, ठीक है, और अब इसको मैंने ऐसा घुमाना शुरू किया, और जब ये घुमा रहा हूं तो अर्थ रिवॉल्व भी हो रहा है, ठीक है, राइट? और अब मैंने इसको वापस 360 घुमा दिया,
सन आप ही हो, क्या ये अब आपके सामने है? नहीं है, ये तो 360 घूम गया, बट अर्थ भी तो रिवॉल्व करके यहां पहुंच चुका है। अब इसको आपके सामने करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा और घुमाना पड़ेगा। क्लियर? अभी पक्का क्लियर है? वेरी गुड। कभी कभी आपके लिए अर्थ बनना पड़ता है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप सनी रहो तो ठीक है, चमकते रहो बस, ठीक है, गुड। सो नाउ, so solar day we have written, so the solar day duration is how much? 24 hours. Clear? All right, very good. So now answer this, try to answer this. Suppose this location 1 is 0 degree longitude, prime meridian, ठीक है, prime meridian है, that one that you have written is prime meridian. How much time will the prime meridian take to do a complete rotation with respect to the sun? Yeah, 23 hours 56 minutes 4 seconds, 24 hours. So the prime meridian takes 24 hours, and not only prime meridian, I told you all the latitudes or the longitudes are same. So all the longitudes take 24 hours for doing one complete rotation with respect to the sun. ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू सन ये कितना डिग्री का रोटेशन है? विद रिस्पेक्ट टू सन, विद रिस्पेक्ट टू सन ये कितना है? ओनली 360, ठीक है, बिकॉज इन एब्सोल्यूट टर्म्स इट इज 360 प्लस समथिंग इन एब्सोल्यूट टर्म्स, बट विद रिस्पेक्ट टू सन it is 360 only, because sun itself has moved that much, that extra this has to travel. So relative कितना किया इसने? 360 only, because this has done 360 plus something, sun has also done that plus something. So when you find relative, कोई चीज जा रहा है 50 plus 10 का स्पीड पे और दूसरा जा रहा है 10 का स्पीड से, what is the relative speed between them? 50 plus 10 minus 10, वो तो 50 है। देखो थोड़ा मोड़ा मैथ्स, इसीलिए माँ बाप बचपन में कहते थे थोड़ा सा मैथ्स समझना जरूरी है, ठीक है। अच्छा आप अपना, अच्छा ठीक है, ऐसा अभी फिर आप ही का भाषा में समझा दो। आपका दोस्त आपसे आगे निकल गया, वो 20 का स्पीड पे मोटरसाइकिल पे जा रहा है, गाड़ी अभी नहीं दिया, दोस्त है आप ही का एज का, तो थोड़ा गाड़ी ज्यादा हो जाएगा, और आपको उसको पकड़ना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप 20 पे गए तब तो पकड़ नहीं पाओगे, तो आप 20 प्लस समथिंग पे जाओगे, तो आप मान लो 20 प्लस 50 पे गया, 70 पे, ठीक है, और फिर आपने उसको कहीं पे पकड़ लिया, आया समझ में? तो आपका उसका रिलेटिव स्पीड कितना हुआ? आप 70 की स्पीड से भागे उसके हिसाब से? नहीं, आप उसके हिसाब से 50 का स्पीड से भागे, क्योंकि वो ऑलरेडी 20 पे जा रहा है। अभी समझ में आया? तो यहां पे क्या हुआ? अर्थ 360 प्लस समथिंग, सन हैज ऑलरेडी डन दैट प्लस समथिंग, ठीक है। सो व्हाट इज द रिलेटिव बिटवीन द अर्थ एंड द सन? 360। क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो अगला टाइम समझ में नहीं आया, क्योंकि आप फिर बाद में बोलोगे सर वो 360 प्लस समथिंग भी था, उसको भी ऐड करो, ठीक है। सो हाउ मच टाइम डज द अर्थ टेक टू डू अ रोटेशन with respect to the sun? 24 hours for doing how much angle? 360 degree. So if in 24 hour it is doing 360 degree, so for 1 degree rotation how much time it has to take? उसको divide कर दो, 24 hour divided by 360, so 1 degree. So how much time does the earth take? So कर देते हैं, for 360 degree it is taking 24 hours, मिनट में टर्न कर दिया। So for 1 degree rotation it will take, ओ मुझे पता है रट के आए हो सारे, हाँ शुक्रिया। So for 1 degree rotation earth takes 4 minutes, ठीक है। So ये कैलकुलेशन समझ में आ गया, ठीक है। तो चाहो तो लिख लो, अगर रटा हुआ है तब तो बहुत ही अच्छा है ना, ओके। बट मुझे रटने पे ज्यादा विश्वास होता नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी रटा हुआ इंसान भूल जाता है।
right? So you understand this 4 minute? So 4 minutes is the time taken for Earth to do 1 degree rotation with respect to Sun. ये prelims question है, right? 4 minutes is the time taken by the Earth to do 1 degree rotation with respect to Sun, not with respect to star. अगर with respect to star दिया तो 4 minute नहीं है, क्योंकि वहां पे वो एब्सोल्यूट का भाषा में पूछ रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना. So they will ask which of the following statement is right. ठीक है, so clear? So 4 minutes, right? So now let me take you back to the latitude. So for example, अब ऐसा समझो, sorry, not latitude, longitudes. So this is the Earth, right? And this is 180 degree. And अभी आ नहीं रहा, आ जाएगा, don't worry. I know, बस इसको switch करना है. आ गया? And the Earth is doing a rotation west to east, ऐसा, west to east. And 0 degree longitude is there. So if this place is 0 degree longitude, right? And let us say the time at this is 12 noon. ठीक है, 12 नून, आज का 12 नून. आज डेट क्या है? हाँ, 5 ना? ठीक है, ठीक. मैं वो 5 का 3 करने वाला था. ठीक है, फिर मुझे याद है 3 तो परसों था. अभी तक क्या हैव आई शिफ्टेड टू पोल्स? और वहां पे भी फिर ऐसा नहीं होता. Okay, so anyways, clear? So 5, 3, 22 का. So suppose at 0 degree longitude, which is the prime meridian, ठीक है, Greenwich वाला longitude, at that we have 12 noon, ठीक है. So if this is 12 noon, then if I take 1 degree longitude somewhere here, ठीक है, and let us say ये 1 degree है और suppose ये 15 degree है. मतलब ये मत बोलना सर 115 इतना पास पास कैसे है, बस. तो ये 1 है, ये 15 है. So if this is 12, so how much time will it take from here to here? 4 minutes. Now think the other way. When this place was at this location, it would have been 12 at 1 degree. This is 1 degree east, है ना, and this is 15 degree east. So when 1 degree east was on this location, यहाँ पे, so it would have experienced 12 noon. How much more it has moved? 4 minutes. So when it is 12 at 0 degree, जब 0 degree longitude के ऊपर 12 है, ठीक है, what time it should be at 1 degree longitude? 12 hour 4 minutes. So this place will have 12 hour 4 minutes of 5, 3, 22. And what will be the time at 15 degree east? तो time बोलो, 1 hour, 1 PM, 1 PM of 5, 3, 22. अच्छा, ये AM PM सबको क्लियर है ना? रात वाले को क्या बोलते हैं? रात को 12 बजे, रात को 12 बजे AM या PM? अच्छा यार, ये एप्पल और पोटैटो बोलो तुम लोग. ये AM PM फिर समझ में नहीं. एप्पल या पोटैटो? एप्पल. एवरीवन इज क्लियर. और दोपहर में 12 बजे पोटैटो. अच्छा, और रात का 1 o'clock एप्पल. पक्का ना? क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूज होते हो बाद में. वो बाद में ना वो कुछ अलग ही चल रहा होता है. एंड मॉर्निंग 11 o'clock, मॉर्निंग 11 o'clock पक्का? वेरी गुड, ठीक है. तो ऑनलाइन स्टूडेंट, अच्छा वो लोग भी बेचारे, यार ये बड़ा बड़ा धोखा है आप लोग के साथ. आई एम सो सॉरी. राइट, थैंक यू सर. सो आई डू सी सर, प्लीज डोंट गो बियॉन्ड द कैमरा. नहीं नहीं, मैं धरती पे ही हूँ, डोंट वरी. कैमरा के बियॉन्ड गया हूँ. ऑलराइट, 360 प्लस, वेरी गुड. 56 6 मिनट कैसा हुआ विशाल? कैलकुलेशन थोड़ा सा चेक करो. ऑलराइट, एंड 1 PM, परफेक्टली फाइन. गुड गुड गुड, ठीक है. सो नाउ, so I hope you understand the time here. Now let us do the same exercise on the other side. 1 degree west, 1 degree west, 11,
56 AM of 5/3/22 and 15 degree west 11 AM of 5/3/22. इतना क्लियर है सबको? आ रहा है समझ में? ठीक है ना? सो दिस इज हाउ यू गो ऑन कैलकुलेटिंग. सो गिव मी द आंसर एट 165 डिग्री वेस्ट एंड 165 डिग्री ईस्ट. मैंने सिंपल नंबर्स दिया है आपको. हाँ, 165 डिग्री ईस्ट और वेस्ट. ईस्ट पे पहले बोलो. 165 डिग्री ईस्ट 11 potato apple. Time date 5/3/22 and at 165 degree west 11 9. ये क्या यहाँ पे बोली लग रहा है सर? 11 9 5 3 जो बोलो 10 11 9. अभी तक राइट आंसर नहीं आया है. 1 क्या पटेटो या एप्पल? एप्पल. 1 एप्पल. बोलो टाइम. 1 11 9 10. एक काम करो आपस में बांट लो. तू 11 बोल, मैं 12 बोलता हूं, तो 9 में. कोई ना कोई तो राइट होगा ही होगा. मैथ्स ठीक से करो यार. सिर्फ पेपर 1 ही नहीं निकालना है, पेपर 2 भी निकालना है आप सबको. ठीक है? पेपर 2 नहीं निकला तो कितना भी जीएस कर लो, कुछ नहीं होने वाला. कैलकुलेशन छोटा छोटा भी राइट नहीं कर रहे हो. 9 यू हैव टू जस्ट गो 11 आवर्स बिहाइंड. सो 12 घंटा 12 बजे दोपहर से 11 घंटा पहले कितना होता है? 9 11 वो सब क्या था? मतलब यू कांट कैलकुलेट. हाउ डू यू सबट्रैक्ट 11 आवर्स फ्रॉम 12 PM और 12 आफ्टरनून? ऐसा मत करिए. मतलब है ना, थोड़ा मैथ्स थोड़ा सा फोकस करो. ओके, सो व्हाट इज द टाइम? 1 AM ऑफ 5/3. सो 1 AM ऑफ 5/3 मतलब 5 है स्टार्टेड और एंडिंग. सो एट 165 डिग्री वेस्ट 5 द डेट 5th March has started or ending, and at 165 degree west 11 PM of 5 means 5th March is ending. Do we agree? पक्का? अब मैं 2 और पूछने वाला हूं. 179 degree west and 179 degree east. इस पे बोलो. What is happening? 11 0004 hours. 0004 hours. 4 minutes into the day. So just 4 minutes. So this day has started just 4 minutes back. और यहाँ पे 11:56 PM. The day will end in 4 minutes. जबकि ये दोनों प्लेसेस कितना पास है? 1 डिग्री और 2 डिग्री. 2 डिग्री मतलब कितना लॉन्गिट्यूड हुआ? डिस्टेंस मैक्सिमम 200 किलोमीटर. 2 places as close as 200 kilometers away. At one place the day is ending, the other place the day is starting. Do you understand this? ठीक है? This is why that 180 degree वाला line we call as international date line, क्योंकि उसका दोनों तरफ डेट चेंज हो जाता है. One side the day is ending, the other side the day is starting. So just you cross that line and your day would change. If you start from here to here. ठीक है? इतना समझ में आ रहा है ये क्या बनाया सर ने? ठीक है, तो if I just slightly make just that line, ये देखो, this is 180, this is 179 degree east, this is 179 degree west. What was the time here? 11:56. पक्का? 0004 राइट, या 12:04 AM.
of which date? 5/3/22, which means 5th is starting. And the other side, 11:56 PM, ठीक है, right? Which of what date? 5/3/22, which means 5th is ending. So now please see here carefully. If you cross from 179 degree east to 179 degree west, इधर से इधर आ गया. When you go from 179 degree east to 179 degree west, what is happening? At 179 east day was, at 179 west day is. So you, जो दिन आप जी चुके हो वो फिर से आ गया. इसको क्या बोलेंगे? लॉस या गेन? डिपेंड करता है आपका एटीट्यूड कैसा है ना, है ना. इफ योर एटीट्यूड इज ओके तो आप बोलोगे गेन. अगर एटीट्यूड है यार फिर से जीना पड़ेगा तो लॉस है, इतना मुश्किल से दिन काटा था. सो दैट डिपेंड्स ऑन एटीट्यूड. बट इन नॉर्मल लैंग्वेज क्या बोलेंगे इसको? गेन ऑफ अ डे. ठीक है. सो व्हेन यू क्रॉस फ्रॉम टू, you call it as gain a day. ठीक है. and opposite of that will be, you are here, आपका दिन स्टार्ट हुआ था, क्रॉस किया, दिन खत्म. ठीक है. तो ये क्या है? Why I'm saying is because बहुत सारे क्लास में बच्चे आगे बोलते हैं सर ये तो गेन ही है ना, दिन तो निकल गया. बिना जिए एक दिन खत्म हुआ. ऐसा तो लाइफ भी खत्म कर सकते हैं यार, है ना. तो ऐसा नहीं बोलना है, एटीट्यूड राइट होना चाहिए लाइफ में. ओके. सो इज दिस ओके? सो डू वी गेट इट? सो व्हेन यू मूव फ्रॉम दिस टू दिस, लूज अ डे, राइट. सो गेन अ डे, लूज अ डे. डू यू अंडरस्टैंड? प्लीज राइट इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड, वो सॉरी लॉन्गिट्यूड. लॉन्गिट्यूड का टर्म्स में है. When you are traveling from which longitude to which longitude, ठीक है. And hence 180 degree will be called as, इसको क्या बोलेंगे हम? 180 को क्या बोल देंगे? इंटरनेशनल डेट लाइन. ठीक है. इंटरनेशनल डेट लाइन. ओके. You do the same exercise at home with 12 night at prime meridian, तब ये और क्लियर हो जाएगा. Suppose at 0 degree longitude it is 12 night. जैसे आपने डे का स्टार्ट किया ना, तो ऐसे ही सोचो, एक सेकेंड ड्रॉ इट कर लेना. I'll give you the time. Just listen and try to think. Suppose at international date line, यहां पे, सॉरी यहां पे, ये प्राइम मेरिडियन पे, rather than noon it is night. यहां पे इट इज नाइट ऑफ, यू नो, नाइट का 12 है, राइट. एंड 5th का नाइट मतलब क्या हुआ? दैट डे इज स्टार्टिंग और एंडिंग. देन you have to say clearly that 5th has started. Suppose 5th has started, right, which means from 4th to 5th नाइट है. 4th to 5th वाला, जैसे आज का नाइट कौन सा नाइट होगा? 5th to 6th का नाइट है आज का नाइट जो आएगा. ठीक है. और जो लास्ट नाइट आपने बिता दिया वो 4 to 5 का नाइट है. तो वैसा ही है. तो सपोज दिस इज 4 to 5 का नाइट. सो एट दिस प्लेस इट इज 12 इन द नाइट. सो एट 179 ईस्ट क्या होगा? नियरली 11 hour 56 minute अहेड. तो मतलब वो अगला दिन का 5th का कौन सा टाइम चल रहा होगा? 11:56 ऑफ मॉर्निंग ऑफ 5th. 11:56 मॉर्निंग ऑफ 5th होगा ना अगला दिन का. और पीछे गया वेस्ट की तरफ 179. सो 11 hour 56 minute बिहाइंड. सो रात से बिहाइंड मतलब 4th का आफ्टरनून, है ना. सो उस लॉजिक से यहां पे 4th का आफ्टरनून चल रहा होगा और यहां पे 5th का आफ्टरनून आ रहा होगा. कैन यू अंडरस्टैंड? दैट्स व्हाई यू कॉल दिस एज इंटरनेशनल डेट लाइन. क्योंकि उसका एक साइड
फिफ्थ का आफ्टरनून या मॉर्निंग है, दूसरा साइड फोर्थ का आफ्टरनून या मॉर्निंग है, तो दोनों ही तरफ एक अलग डेट चल रहा है. दैट्स व्हाई यू कॉल इट एज इंटरनेशनल डेट लाइन. हमारा एग्जाम्पल के अंदर डेट चेंज नहीं हुआ जो हमने अभी बनाया है, बट इफ यू जस्ट टेक दैट एग्जाम्पल ऑफ 12 नाइट देन यू गेट इट मोर क्लियर. इज दैट ओके? ठीक है. सो नाउ यू ड्रॉ दिस ऐसा and write everything that is there. All right, done. अभी तो शुरू भी नहीं किया सर. Okay. 179, 12, 4 AM. बिल्कुल ठीक है. And 179 East, 11:56 PM. Good, sir. Please repeat one more time. Vishal Kumar, please watch it one more time. Rather than me repeating. मतलब यार repeat करने को मत बोला करो. Okay. Done? Yes or no? हो गया? Very good. So now, if this is clear, then the next thing. Please see here. अब मैं कुछ और कॉम्प्लिकेटेड पूछने वाला हूं, थोड़ा सा अभी समझना है. ठीक है, अभी ऐसा देखो. द इंटरनेशनल डेट लाइन विच शुड हैव बीन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, वो ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था उसको. ठीक है, बट इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन एक्चुअली. ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, so it should have been the international date line. Okay, geographically this is the international date line, but actually this is not the international date line. Why? Try to understand. This line was made much later, but countries already existed, and there were countries which were on both the sides of the line. For example, उसका कुछ island इधर था, कुछ island इधर था. ठीक है. Now just imagine for a country which is having a total of 10 islands and a population of 1 lakh people or 10,000 people, आधा इधर आधा उधर, उनको दो डेट में रहना पड़ेगा, दो टाइम जोन्स. Do you understand? Because we have many small island countries here and many of them are divided on both sides of 180 degree. So they said sir हमारे पास तो ऐसे ही रिसोर्स नहीं है, वैसे ही डूब रहे हैं क्लाइमेट चेंज में, ऊपर से टाइम जोन भी दो कर दो. है ना, दिन भर हम टाइम ही देखते रहेंगे. Right? So please put us on the same side of the line. Right? Put our islands on one side, either this side or that side, and depending on their affiliations, they got arranged. So continent तो हम change कर नहीं पाए और islands, so we modified the line. ठीक है, so that 180 degree line was bent at many places to accommodate one group of islands or countries on one side. ठीक है, that's why this line is, वो zigzag line दिख रहा है, ऐसा है. ठीक है, so international date line is not 180 degree. It is in tune with 180 degree, but not exactly 180 degree. Clear? है ना? Right? So good enough. So should we write this? लिख लो. That international date line which is in tune with international date line which is drawn with reference with, you write this way, which is drawn with reference with international date line which is drawn with reference of 180 degree longitude is rather a zigzag line, putting one group of island nations completely on one side of the ideal, so that they don't have to maintain two different time zones. One side of IDL so that they don't have to maintain two different
टाइम जोन्स एंड डेट्स. ठीक है. Hence the ideal is a zigzag line. Hence the ideal is zigzag. Okay. So that they don't have to maintain two different time zones and dates. Hence the ideal is a zigzag line. ठीक है. Now ideal is international date line. अच्छा, हाँ जी बोलो. समथिंग. वो नहीं कर रहे वहां पे. इंटरनेशनल डेट लाइन पे हमने थोड़ा सा अकोमोडेट करना आना चाहिए लाइफ में यार, नहीं तो पीओके कभी समझ में नहीं आएगा. ठीक है. राइट. आप जाके बॉर्डर पे खड़े हो जाओगे, नहीं हमारा तो बॉर्डर यहाँ पे, उधर चाइनीज गोली मारते रहेंगे. ठीक है. तो वापस आओ अपना देश में, देश को स्ट्रॉन्ग करो ताकि कभी फ्यूचर में अटैक कर सको जरूरत पड़ने पे. ठीक है. नहीं तो वहीं पे बॉर्डर पे फोटो लगा रहेगा बस, एक आया था. ठीक है. ओके. सो ऑलराइट, so come back. Right. So this is just, that's why I said this is completely political adjustment. Okay. तो वहां पे हम longitudes का ट्रेंड्स में बात कर सकते हैं. You can always locate yourself, but time you will follow of the other region. ठीक है. Is that okay? Very good. So how does a country calculate its time? इंडिया अपना टाइम कैसे कैलकुलेट करता है? For that you have to understand. So इधर देखो. First understand. See here. When you talk of India, what is the longitudinal expanse of India? Longitudinal expanse. Gujarat 68, East, and Arunachal 97 point something East. ठीक है. Which means if I ask you that with respect to 0 degree, that 0 degree, ठीक है, ये कितना देर आगे है? This one 60, मतलब nearly 4 hours. 4 hours और 8 degrees 8.5, so उसको half 7.5 कर लो. So this is nearly 4 hour 30 minutes ahead. Can we say? And this much 97 मतलब 9 hour 90 मतलब 6 times हो गया ना. 15 से डिवाइड कर दो, है ना. So कितना हुआ? 6 hours and 30 minutes ahead. So from Gujarat to Arunachal, how much time gap is there? 2 hour time gap is there, है ना. Which means if we take the real time of Gujarat and if we take the real time of Arunachal, Arunachal will have 6:30 and Gujarat will have 4:30, and then in between places will have their own. क्योंकि हम तो ऐसे ही अपनी आवाज उठाने के लिए, है ना, माहिर हैं. हाँ, मेरा ही क्यों नहीं होगा, सिर्फ गुजरात का क्यों होगा, सिर्फ अरुणाचल का क्यों होगा, बीच में असम भी बोलेगा, है ना, सिक्किम बोलेगा, यूपी बिहार तो ऐसे ही बोलता रहता है. ठीक है. राइट. सो द गवर्नमेंट से इतना सारा टाइम जोन हम नहीं बना सकते. राइट. राइट. हमारे देश का लोग ऐसे ही इतना पढ़ा लिखा है, सब लोग घड़ी मिलाता रहेगा दिन भर. तुम्हारा यहाँ कितना टाइम हो रहा है, मेरा यहाँ कितना टाइम हो रहा है. ठीक है. सो फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, फॉर व्हाट? Administrative convenience, a country creates time zones. Right. So what did India say? India said we'll take the middle time. Right. And we took the time of 82 degrees 30 minutes east. हमने बोला हम इसका टाइम लेंगे. Why? Because this is a pretty mathematical number. Clear? 5 hour 30 minute ahead. ठीक है. फ्रॉम ग्रीनविच मीन टाइम. ग्रीनविच का टाइम से इतना आ गया है ना. 75 प्लस 7.5, so 75 means 5 hours and 7.5 is half of 15, that means half an hour more. So we take this time as our national time. So from Arunachal to Gujarat everyone has to follow this time. That's why when you see in your watches, आजकल आपका बहुत सारा डिवाइसेस में वो टाइम पूछता है ना, तो उसमें लिखा होता है +5:30 कोलकाता, दिल्ली, मैड्रास एंड दिस थिंग बॉम्बे. तो सबका वो +5:30 है. Why? Because country follows this time.
You are not following the time of the place. You are following the time of your country. And if you think this is too bad, you look at China. ठीक है, इंडिया तो इतना सा है, मतलब इतना सा नहीं है, सॉरी रॉन्ग वर्ड, है काफी बड़ा है ना, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर आप एंटी नेशनल हो। यार आजकल आप लोग कभी भी एंटी नेशनल किसी को ही बुला देते हो, तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ठीक है, राष्ट्रवादी लोगों, ठीक है। सो लुक एट चाइना, ये देखो, अब इस मैप में मुझसे ये मत पूछना सर वो इंडिया का ऊपर वाला पार्ट का है, यार ये मैंने नहीं बनाया है, ठीक है, मेरे को बेस्ट मैप जो आपको दिखा सकूं वो यही मिला था, तो मैंने सोचा इतना तो मेरे बच्चे भी समझ जाएंगे। ऑलराइट, इज दैट ओके? पक्का कुछ ऐसा उल्टे सदो नहीं डाल दोगे ना सर ऐसा मैप दिखाते हैं कश्मीर गायब है, वो गायब है ठीक है, मतलब राइट। सो सी हियर, so what do you find here? This is India and whole of India is colored in the same shade. That means India follows one time zone. But if you see China, that is also in one color, and China is much wider than us. Okay, but even China follows one time. उनका पूरा देश में एक ही टाइम जोन है और वो कम्युनिस्ट है। वहां कोई भी बोलता है सर ये गलत है तो उसको सीधा बात नहीं करते हैं या तो ओलंपिक टीम में डाल देते हैं या गोली मार देते हैं, ठीक है, ज्यादा बात नहीं करना है, या फिर अपना फैक्ट्री में लगा देते हैं, तुम एप्पल फोन बनाओ ज्यादा बात नहीं करो, ठीक है। सो होल ऑफ चाइना हैज वन सिंगल time zone, despite of the fact that it's a wide country, but just for administrative convenience they have made one time zone. Do we see? But when you see a country like Russia, Russia कहां से कहां तक expand करता है, you can see ठीक है, तो Russia expands from nearly, you can see here, ये वाला time zone, ये वाला, right? So this is approximately something like +1 hour on the western side to +12 hour on the eastern side. So if you see this is almost a 10-11 hour expanse. ठीक है, 11 hour का मतलब half day हो जाता है, right? So if at one place it is sun is rising, the other place sun will be setting. So in such a condition you can't keep one time zone, क्योंकि कहीं पे सन राइज हो रहा है तो इट इज लेटर से 6 AM, जहां सन सेट हो रहा है 6 PM और इन बिटवीन 12, तो अगर रशिया से इसकी 12 o'clock मॉर्निंग, राइट, 12 o'clock आफ्टरनून और नून दैट यू कॉल, सो इफ इट फॉलोज वन टाइम देन व्हाट विल इट बी? 12 noon. So at 12 noon some of the people will say see the sun rising, and at 12 noon some other people will see the sun सेटिंग, और सबके सब एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोल रहे होंगे। सोचो कितना इडियोटिक सिचुएशन है, सन डूब रहा है और आप बोले गुड मॉर्निंग, ऐसा लगता है कॉल सेंटर में लाइफ बिताई है ना, राइट? नहीं इतना इमोशनल नहीं होना है ओके वो बेचारा बोला सर कॉल सेंटर को ऐसा बदनाम क्यों, है ना, कोई बात नहीं। सो डू वी गेट इट? ऑलराइट, सो दिस इज व्हाई despite of the so they have compromised their administrative convenience, because administrative convenience should not mean that you kill the people. ये उन सबको बोलो नहीं आप सबका तो मॉर्निंग ही हो रहा है जो भी हो, ठीक है। so they have divided the country into time zones. So what is the meaning of time zone? Why do we create time zones? We create time zones so that our geographical time, clock time and body time are in sync. ठीक है, because why? Because our body time and the solar time is in sync, but if our clock time is not, then everything goes wrong. क्योंकि आपका बॉडी तो सन के हिसाब से चल रहा है। Why? Because we are diurnal animals. नॉक्टर्नल तो है नहीं, कैसे पता चलता है? आई साइट बताती है, सारे नॉक्टर्नल रात में देख सकते हैं, आप नहीं देख सकते, इसका मतलब आप डायर्नल एनिमल है, ठीक है, वैसा ही इवॉल्व हुए, तो हमारा क्लॉक भी वैसा चलता है। दैट्स व्हाई वी हैव डिफरेंट टाइम जोन्स, सो दैट आवर क्लॉक टाइम
and the biological time and the solar time are in tune. Right? So we divide the country into different zones. So if you see here, Russia has different time zones. ठीक है, रशिया का बहुत सारा टाइम जोन है. USA has different time zones. Canada has different time zones. This way. Is this clear? So do we understand this concept of time zone also? ठीक है, very good. So let us write this. Right? So India follows one time zone. India follows one time zone which is with respect to the 82 degree 30 minutes east longitude. 82 degree 30 minute east longitude. And hence we are 5 hour 30 minutes ahead. Hence we are 5 hour 30 minute ahead of the Greenwich Mean Time. Greenwich Mean Time. Similarly, China also. China also follows one time zone. One time zone. But countries like Russia, USA, Australia, Canada, follow different time zones. Okay, because of their wide longitudinal expanse. They spread across longitudes. Right? Now, which are the countries have wide longitudinal expanse? EXPANSE. Right? So, which are the countries having maximum time zones? If you see the contiguous country, contiguous matlab one single land, connected land, then it is Russia. Right? Russia has maximum time zones as one single contiguous zone. Contiguous का मतलब होता है connected. When you see discrete zones, then it is France. Why? Because France, the country doesn't have many time zones. It has only one. But it has islands in different time zones across the world. In Pacific, Atlantic, Indian Ocean, हर जगह उसका island है. ठीक है? So when they take the time zones of each of these islands, then it counts to 12 time zones. ठीक है? But just one region, it is. Do you get it? Is this clear? Right? So we write this. France has maximum territory in different time zones. Maximum territory in different time zones. Maximum number of territory, not area of territory. Maximum number of territories in different time zones. And hence has 12 time zones. Maximum number of territories in different time zones. Hence 12 time zones. Though mainland France has only one time zone. Mainland France has only one time zone. Russia has 11 time zones. 11 time zones. Russia has 11 time zones over its contiguous territory. Contiguous means continuous. Contiguous we say. Contiguous territory. And USA also has 11 time zones. USA also has 11 time zones over its mainland
and different islands. Mainland and different islands. Okay? So this is the concept of time zone. Clear? Now there is another concept of time, daylight saving time that we have to talk of. Okay. So daylight saving time we'll do once you come back after the break. So let us take a 10-minute break. फिर मिलते हैं, जाओ. Online people, do I see any doubt or something? No. Okay. Sir, more eastward we go ahead in time. Yes, Anurag Sabar, you are right. So, should we? ये सर अब आप चालू हो जाओ. हमारा हो गया. Okay. आप लोग का क्लासेस में ना मुझे बहुत सारा पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस याद आते रहते हैं. When I was a kid, my mother, so हमारा घर में there was this पर्दा प्रथा, which was traditional, you know. So whenever my grandfather would come, my mother would put that पर्दा thing. आप लोग के घर में भी होगा maybe कुछ घरों में. So whenever my grandfather would, you know, he used to walk in, वो घुसते समय करते थे. And as a kid we used to ask, दादा आपका गला हमेशा खराब रहता है. He would just laugh. वो कुछ बोलते नहीं थे. So gradually we understood. फिर we started seeing the coordination. अच्छा. अभी दादा है. He will देखते हैं मम्मा क्या करती है. ठीक है. So आप लोग का क्लास में मुझे थोड़ी देर थोड़ा you know गला खराब होना हो ऐसे ही थोड़ा आवाज करते रहना पड़ता है ताकि थोड़ा संभल जाओ. नॉट अबाउट पर्दा प्रथा, ऐसा नहीं कि पर्दा वर्दा लेके आना कल से बट राइट. सो गुड, लेट अस कम बैक. सो the concept of daylight saving time zones we have done, all right, and time also we have understood. Next is daylight saving time. ठीक है. So put that subheading, daylight saving time. Right. So what is daylight saving time? First we have to understand, because for most of you this is not most, almost or everyone, this would be a new word because you have never experienced, because you are tropical people. Right, this is a phenomena normally in the polar and temperate region. Right. So what happens is, we just saw today that the duration of daylight changes in those regions. In the summer it is longer, and in the winters it is shorter. है ना, अभी देखा था हमने थोड़ी देर पहले. And winters are very cold, summers are you know moderate and all. So just to utilize the sunlight for maximum number of hours, right, just to ensure that the sunlight is there in the sky for more number of hours and they don't have to use lights, you know, electrical lights and all, and they can use the evening time, because normally we do most of our work in the evening. This phenomena of daylight saving time is there. So what they do in this is,
they put their clock ahead in time. ठीक है, जैसा आप एग्जाम से पहले करते हो ना, सुबह उठने के लिए 15 मिनट आगे कर दिया घड़ी, हाँ 15 मिनट पहले उठेंगे, फिर जब उठा तो देखा अच्छा कल रात में आगे तो किया था, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इफ इट इज शोइंग 7, 6:45 ही बज रहे हैं अभी। ठीक है, होता है ना, तो वही डे लाइट सेविंग टाइम आप भी करते हो, you know, so that you can catch up with time, right, and you are not left behind. So there also they do this. So what they do is that when the springs arrive, they put their clock ahead, right, they will put their clock ahead. So rather than 6 it will be 7, right. So earlier suppose the sun was setting at 7, now the sun will set at as per the clock, मतलब असली में तो उतने बजे ही डूबेगा, but as per clock 8, है ना. So they will have that 1 hour extra of sunlight in the sky as per their clock, and not only them, everyone in the country. So this is a national level practice, right, that during during spring they put the clock ahead by 1 hour, the whole country has 1 extra hour of sunlight. Okay, so whatever the sun, if the sun was supposed to set at 7, now it will set at 8. But what time will it rise? If it was supposed to rise at 7, it will rise also at 8, right? But morning में तो हम ज़्यादातर बाहर होते नहीं है ना, right? So this is an urban practice, you can say. It's not a very old practice, it's an urban practice. In urban areas, they generally set their clocks 1 hour ahead in that period, so as to get 1 extra hour. And then once the winters will come, then they will set it back. Okay. And then there is again debate on the usefulness of this. So sometimes they do it, sometimes some years they would say no, this year we will not practice. So in Russia and USA and Canada, they have done it few times, they have cancelled it few times, some have made it constant, some have said we won't do it. But there is a concept of this kind. Okay, because obviously it's a give and take. So when you are taking, when you are taking 1 hour in the evening, you are giving 1 hour in the morning. तो कुछ लोगों को वो भी प्रॉब्लम है, वो कहेगा नहीं हमें तो सुबह ही सारा काम है. Do we get it? But yes, we do have this practice. So we have to write about it, right? So you can write that in the temperate and polar regions, to utilize the evening sunlight, productive hour, utilize the evening sunlight productive hour. That's a productive hour, na? Productive hour for 1 more hour. There is a nationwide official practice. Of putting the clock 1 hour. Nationwide official practice of putting the clock 1 hour ahead at the beginning of spring. 1 hour ahead at the beginning of spring. So hence, if earlier as per clock sun was setting at 7, hence, if earlier as per clock sun was setting at 7, now it will set at 8. Hence, earlier as per clock, if the sun was setting at 7, now it will set at 8. Right? Giving 1 extra hour of evening sunlight time. Giving 1 extra hour of evening sunlight time. Evening sunlight time, comma, though at the cost of morning sunlight time. Though at the cost of morning sunlight time. Why? Why at the cost of morning sunlight time? Because now the sun will rise 1 hour late as per clock.
Because now the sun will rise 1 hour late as per clock. Now sun will rise 1 hour late as per clock. So this practice is reverted back. This practice is reverted back at the beginning of autumn. Practice is reverted in autumn. Revert means you come back. Okay. Full stop. Right. So this is what you call as daylight saving time. Okay. Now there's another way they can do. They can change their time zone, but that's a bigger practice. So rather than doing that, they just switch their clocks. Right. Now once we come to this aspect, then comes another question, sir. Is there a need of something like this in India also? Okay. For example, India is a big country, so should we not have two different time zones? There are demands for this in many parts, especially in the northeastern states, right? So come to India, Indian context. Put the subheading, Indian context. Subheading likhiye, Indian context. So in the Indian context, Anurag, Anurag sir, I think you have said the question of Aruna. So Aruna, we are coming to your question. In the Indian context, many times there is a demand of two time zones. Many times there is a demand of two time zones. Demand of two time zones. Especially in the northeastern states. Especially in the northeastern states. Because for them sunset happens 1 hour earlier. Sunset happens 1 hour earlier. Right? Than the average sunset time for the country. If you take from the middle of the country, in the northeastern state it will happen 1 hour earlier. Okay? But for administrative convenience, the government has not agreed to this. Public convenience, it is demanded. Administrative convenience, government has not agreed. Why? Because government says that it will be difficult for us to manage different time zones in the country because people are not very educated. At the railway stations, we have to accordingly shift the times. Right? People also, once they change time zones, they have to switch their clock. Many people are not educated. So many challenges can happen. Okay. Now, people are pretty smart. People, है ना, जब एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करता है तो आपके पास भी तो तरीका है ना. एडमिनिस्ट्रेशन गाड़ी रोकता है सड़क पे, बोलता है फाइन है. आप क्या बोलते हो? देख लो सर. सीधा 100 रुपए दे दो यार, अमीर आदमी हो. तो आप क्या बोलते हो? देख लो सर, है ना. तो वहां के लोगों ने भी ले दे के बात कर. IAS बनने का सपना देख रहे हैं, है ना. ले दे के बात अभी से चालू है. अकाउंट तो नहीं खुलवा रखा. मैं तो बनने वाला हूं, देना शुरू कर दो अभी से. पुलिस वाला हर हफ्ते आगे आपके घर पे पैसा चढ़ा जा रहा है. हाँ, जितना प्रीलिम्स का क्वेश्चन निकलता जा रहा है उतना पैसा आता जा रहा है. ठीक है, ले देंगे. हाँ तो ठीक है, मतलब सो व्हाट पीपल हैव डन इज दे हैव फाउंड अ इजियर वे टू दिस. Especially this challenge happens in the tea gardens of that region. So in those tea gardens they generally keep their clock 1 hour ahead all the time. ठीक है, so वो अपना घड़ी हमेशा 1 घंटा ऐसे ही आगे रखते हैं. राइट, सो उन्होंने डे लाइट सेविंग टाइम का कॉन्सेप्ट वैसे ही अप्लाई कर रखा है. एंड दे आर ऑलरेडी इन अ डिफरेंट टाइम जोन एज पर देयर कन्वीनियंस. राइट, so this practice is something like a different time zone as well as daylight saving time, which the many people in that region, especially the tea garden people and all, they are already doing this. Okay, so there was one part, there was a demand. Second, the government said no, people said no problem, we'll manage our ways. Right, so do we get it? Right, so why do they adjust their clock?
so as to get 1 extra hour. Now, will this problem happen even in Gujarat? Yes or no? They are blessed. उनके यहाँ 1 घंटा लेट होता है. ठीक है? So as you keep going west, the sunset problem will not be there. Right? If that region is behind the time zone, then they will not face, because let us say in UP the sun is setting at 6, in Gujarat it will set at 7. Okay, so they won't have a problem. It will only be with regions which are ahead of that time zone in geographical terms. Okay, is that okay? So there could be a question, why they don't demand? The time zone demand only comes from eastern states, not from western states. Why? The logic is western states are already having that geographical convenience of being 1 hour behind. So their sunset anyways happens 1 hour later than the rest of the regions. Okay, is that okay? Good. So with this we come to the end of all this. Time zone, latitude, longitude, movement, ये सब हो गया. So with this you can write, hence we come to the end of movement and their effects. Movement of the earth and the effects. Hence we come to the end of movement of the earth and its effects. Latitude, longitude, everything over. Now let us start with the next topic. Should we? Movement of the earth and related topics. So what is the next topic to start with? Climate, atmosphere and climate. Very good, atmosphere and climate. So next subheading, atmosphere. Question है? हाँ बोलो बोलो. नॉर्वे देयर इज अ मिडनाइट. देखो मिडनाइट सन इज नथिंग बट व्हेन, वही जो आपने बोला ना कि रात का 12 बज रहा है बट स्काई में सन है, तो उसी को हम मिडनाइट सन बोल देते हैं. हाँ, क्योंकि वो एग्जैक्टली 6 महीना नहीं रहेगा ना, वहां लेट तक रहता है फिर खत्म हो जाता है. हाँ, तो मे बी देयर सन वुड सेट एट इन द समर्स इट वुड सेट लेटेस्ट से रात को 12 बजे सेट हुआ और 2-3 बजे फिर से निकल गया, तो 12 बजे तक तो मिडनाइट सन है ना. घड़ी में रात का 12 बज रहा है और सन दिख रहा है स्काई में, सो दैट इज मिडनाइट सन. ठीक है? एनीथिंग एल्स? नन? शुड वी राइट द टॉपिक? क्या लिखा है? एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट एंड देन वील स्टार्ट विद द टॉपिक. राइट, सो सबसे पहला आपको ये समझना है कि हम एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट में पढ़ क्या रहे हैं. व्हाई? बिकॉज इन एनसीईआरटी देयर आर 3-4 chapters. GC Long there are 2 chapters, 13 and 14, and then chapter number 15 to 25 में climate का part है. Right, so there are 12 chapters related to climate in GC Leong and there are 4 or 3 chapters related to climate in NCERT. अब उन सब में दिया क्या क्या है? Let us first understand that and then we'll do it. Okay, so we'll first try to understand the sequence of this topic. All right, so give me a moment, let me just upload the image for you people. तब तक गप्पे मार लो. आप लोग टाइम तो वेस्ट करते नहीं हो. सर आप टाइम दो बस, हम तो
RB2, right? Okay. All of you, please be here. And so when we start with this climate wala part, okay, atmosphere and climate, basically first sources कहाँ से पढ़ना है? Alright. So in your NCERT, you can refer to your class, I think, 11, Fundamental of Physical Geography. Right? इसमें chapters are there on climate. Then there is this last chapter on climate, world climatic regions. Last chapter which gives you world climatic regions or world climate, something like that. So there is a chapter which gives you world climate or world climatic region. That chapter you don't have to, in that world climatic region thing you don't have to read. Please don't read it from there. That's very confusing. UPSC has never asked a single question from there. It gives you the Köppen classification. Köppen classification UPSC has never asked in GS. ठीक है, कभी एक भी क्वेश्चन वहां से नहीं पूछा उसने, क्योंकि वो काफी टेक्निकल है, राइट? इन ऑप्शनल यू डू इट बट नॉट इन जीएस. तो ये क्या नहीं पढ़ना है उसमें से? वर्ल्ड क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन. चैप्टर नंबर कितना है बताओ जरा, लास्ट वाला 12. सो चैप्टर 12 एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? वर्ल्ड क्लाइमेट, है ना? हाँ, तो वर्ल्ड क्लाइमेट नहीं पढ़ना है, क्लाइमेट चेंज पढ़ना है. ठीक है, सो यू हैव टू जस्ट लीव दैट वर्ल्ड क्लाइमेट पार्ट and you have to read the climate change part. Okay, so if you don't read the world climate from here, then where should we read it from, sir? Question. You have to read this from chapter number 14 of GC Leong. Last pages, last 2 page. There the world climate is given, especially in a diagram. 11 regions in a diagram. Right, GC Leong, chapter number 14, last 2 pages, there is a diagram on world climate with 11 regions. That diagram you have to do. ये जो नीचे diagram है ना, yes, ठीक है? So that diagram you have to do. That's the only world climate region thing that you have to do. Now once you see this 11, then chapter number 15 to 25, कितने chapter है ये? 11. तो 11 रीजन का 11 चैप्टर्स आर गिवन. ये क्या हो गया सर, हम तो सोचे थे 2 पेज में निपटा देंगे, ये तो चैप्टर ही बन गया है. ठीक है, 11 चैप्टर्स आर गिवन, बट घबराओ नहीं, यू डोंट हैव टू रीड दोज 11 चैप्टर्स ऑल्सो. इन एवरी चैप्टर देयर इज 1 to 2 पेजेस ऑफ क्लाइमेट. ठीक है, हर चैप्टर में क्लाइमेट का 1 या 1.5 या 2 पेज है. यू जस्ट हैव टू रीड दैट. ठीक है, सो क्लाइमेट सेक्शन, क्लाइमेट पार्ट ऑफ GC Leong. तो एवरी चैप्टर क्लाइमेट पार्ट यू हैव टू रीड. इज दैट ओके? इतना तो कर सकते हैं. तो मतलब सारा मिला के 10, 12, 15 पेज का क्लाइमेट होगा. दैट्स ओके, इतना पढ़ना पड़ेगा. ऑलराइट, एंड इफ यू आर रीडिंग क्लाइमेट, ऑल्सो रीड वेजिटेशन. दैट विल हेल्प इन इकोलॉजी एनवायरमेंट एंड हियर ऑल्सो, एंड इन इंडिया vegetation also. So in those chapters of GC Leong, read
क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, दो चीजें पढ़ लेना, ठीक है. सो आई एम गिविंग यू टाइम, आपके पास काफी टाइम है, आराम से पढ़ो. Right? So this is the sequence that you have to follow. Apart from that, you have to read everything from NCERT. World climate के सिवाय सब कुछ कहाँ से पढ़ना है? NCERT. If time permits, you can read GC Leong also. If time permits. If no, then don't give up on GC Leong, but at least do NCERT. So NCERT plus GC Leong, chapter number 14, last 2 pages, plus chapter number 15 to 25, climate section. This is what you have to read. This is the must from my side. ठीक है? Clear है? पक्का? वेरी गुड. सो यू नो द सोर्स. शुड वी गो बियॉन्ड द सोर्स? ठीक है. नाउ लेट अस ऑर्गेनाइज द सोर्स. सो व्हाट ऑल विल यू कम अक्रॉस व्हेन यू रीड दिस? इस सब में मिलेगा क्या आपको? ठीक है. So when you see the world climate part, there are sections to it. One is the atmosphere. Please all of you now ये लिखना है, because this is the sequence that we are going to follow in the class. And whenever you get lost in climate section, which you will mostly get, because this is the most difficult part of geography. Geography में इससे मुश्किल कुछ नहीं है. अगर ये हो गया तो समझो सब हो गया. ठीक है. So if you get lost, you should know कि वापस कहाँ आना है और हम कर क्या रहे हैं. तो जब भी आपका ये मन करे सवाल पूछने का, सर ये क्या चल रहा है, क्योंकि ये करेगा, तो कहां देखना है? वही लिखवा रहे हैं. ठीक है. कि अगर ये पढ़ा रहे हैं तो ये चल रहा होगा. ठीक है. वेरी गुड. सो इन एटमॉस्फेयर, व्हाट इज द सीक्वेंस वी आर गोइंग टू फॉलो? द फर्स्ट इज the composition of atmosphere. Composition. What does it? Atmosphere made up of. Then the second is structure of atmosphere. Structure. So composition means what is it made up of, and structure, how is it made up of. Right? Which are the different regions. Structure मतलब उसका region क्या क्या है. ठीक है. Then once you understand, then you come to sun's insolation. Sun's insolation, right? Or heat source of atmosphere. Heating source of atmosphere. Heating source of atmosphere is the next thing. ठीक है. So parts of insolation. Parts of insolation, then insolation budget, insolation distribution, which is called as the heat budget. Insolation distribution, also called heat budget. तो heat budget क्या है हमारा? How do we get heat from the sun and how do we use it, and how is it used and how is it returned and all that. ठीक है. So first if I ask you, थोड़ा थोड़ा idea भी देते रहो. If I ask you what is the composition of the atmosphere, what is the atmosphere made up of? Gases. Is it only gases or something more? Dust particles or water vapor. तो ये सब कुछ है. Now is the earth only planet to have an atmosphere? Many other planets also have. So first we'll see which all planets have. Second we'll see what is the atmosphere composition. Third, structure. So what are the regions in the atmosphere? Are we aware? थोड़ा मोड़ा पढ़ा होगा, नाम तो सुना होगा, है ना? Which are the names? सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर, उसका ऊपर ऐसा ऐसा कुछ सुना है ना, आइनोस्फेयर, ओजोन लेयर, ये सब सुना है. सो वील डू ऑल दैट. वो सब पढ़ेंगे कहां कहां क्या क्या है. ठीक है. उसका इफेक्ट क्या है. देन नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अर्थ एंड द प्लूटो, क्या डिफरेंस है मेजर? अर्थ हैज अ एटमॉस्फेयर, प्लूटो डजंट हैव. प्लूटो में एटमॉस्फेयर नहीं है. हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम द सन, उससे फर्क क्या पड़ेगा? प्लूटो का भी एटमॉस्फेयर है,
मीथेन का? टेम्परेचर. Temperature on the earth is very different. You are able to survive on earth, but will you survive on Pluto? Why? Very cold. Why? Because the sunlight is not reaching properly. ठीक है, sun is not able to heat up, which means what is making earth special? Why did life evolve on earth? एक zone हमने पढ़ा था, Goldilocks zone. What was Goldilocks zone? A region which keeps the earth habitable. Habitable का fact क्या क्या character था? Heat. It was warm enough, right? So earth is warm enough, and if earth is warm enough, where are we getting the warmth from? Sunlight. So sunlight is the source of the heat. So if sunlight is the source of the heat and heat is the energy that we are getting, so now if I ask you, do you think earth is constantly storing the energy that it is getting? अच्छा एक बात बताओ, if you go on storing, let us say, don't give me the answer, try to debate through and you get the answer. If the earth was constantly storing energy, then what will happen to the total heat energy of the earth? Increase. If the heat energy will increase, what will happen to the temperature? Temperature will increase. So what would have happened to the earth's temperature in 4.6 billion years? क्या हो चुका होता अगर अर्थ वॉज स्टोरिंग एनर्जी? तो अर्थ का टेम्परेचर कितना हो चुका होता? आई एम टॉकिंग ऑफ द पीरियड not 4.6, let us say 4 billion, because 4 billion year before present we had continent, we had atmosphere, we had oceans, and if we had ocean, that means it was not boiling, because life has also evolved in it, which means it was almost similar temperature to present. So if 4 billion year before present the temperature was similar to what it is right now, similar, I'm not saying same, if it was similar, then over these 4 billion years has the earth stored heat energy? If earth would have stored, then earth would have become hotter. So one thing you can say for sure now, पहले जो आपने no बोला वो रटा हुआ था, अभी लॉजिक समझ में आया? If somebody asks you how can you say, तो आप क्या बोलोगे? यार सिंपल सा बात है, 4 billion year before present there was ocean, there was life in the ocean, which means life was existing, which means temperature was normal, and presently also life is there, it is normal, which means in 4 billion years earth has not become, and if it has not become hotter, then it has not stored heat energy. It has not stored heat energy. नहीं तो अगर heat energy stored करता तो वो गर्म हो चुका होता. Simple. Do you get it? So earth is not storing heat energy. Now the other way, is the earth releasing heat energy? Huh? If from that period till now, again go logically, if from that period till now earth was releasing heat energy of its own, then what would have happened on the earth? क्या होता अगर उस समय से अभी तक अर्थ हमेशा हीट एनर्जी अपना रिलीज कर रहा था, इट्स ओन हीट एनर्जी? आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द, देखो अच्छा एक बात बताओ, एक और तरीका समझो, आर यू पीपल स्टोरिंग मनी? यस सर, एफडी कराती हो? आर यू पीपल स्टोरिंग मनी फ्रॉम द मनी दैट यू गेट फ्रॉम योर पेरेंट्स? स्टोरिंग मनी फ्रॉम द मनी दैट यू गेट फ्रॉम योर पेरेंट्स कर रहे हो? कितने बच्चे हो क्लास में जो कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हो? सर एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं माँ बाप का पैसा लेके, ताकि कुछ साल बाद कुछ पैसा रहे हमारे पास. बोलो कौन कौन कर रहा है? आप हाथ खड़ा कर रहे थे? नहीं, वो सब आप ही को देख रहे थे. ये तो बहुत इंटेलिजेंट गर्ल है, कोचिंग के नाम पे पैसा लेके एसआईपी कराती है. ठीक है. So none of you are storing. Does that mean that you are not getting any money from your parent? You are not storing. Does that also mean that you are not getting any money from your parent? Are you getting money from your parent? Yes. Are you storing money? Where is the money going? Spend. Simple. बोलो, है ना? That is what keeps you warm. पैसे का गर्मी सुना है ना? है ना? तो ये पैसे का गर्मी है, राइट? डिपेंडिंग ऑन कितना पैसा मिला उतना गर्म आप होते हो, राइट? सो डू यू अंडरस्टैंड नाउ? आर यू गेटिंग मनी? यस. आर यू स्टोरिंग मनी? आर यू यूजिंग मनी? व्हाट इज दैट डूइंग टू यू? कीपिंग यू इकोनॉमिकली वार्म. ठीक है. सो दैट मीन्स इफ यू आर गेटिंग 100 rupees, you are
आजकल 100 रुपीज में कोई वार्म नहीं होता है. If you are getting 100 rupees, you are using that 100 rupees to keep you economically moving, and you are spending that 100 rupees also. So if you get 100, you spend 100. Do you understand? Now talk in terms of earth and sun. So who's the father here giving the money? आप समझ में आ गया? ठीक है. Is the earth getting heat? Is it storing heat? Is it using heat? What is that using heat doing to the earth? Keeping the earth warm. आया समझ में? Now next part. So if you are not storing heat, are you spending your own heat? हाँ, क्या आप लोग के पास अपना स्टोर्ड पैसा ऑलरेडी है पुछला जो कि आप खर्चा कर रहे हो आजकल? होते हैं कई, सर हम कमा के आए, फिर हमने पैसा बैंक में डाला, खुद को बोला 2 साल पढ़ेंगे, वी आर यूजिंग दैट. सो इट्स नॉट दैट वी डोंट हैव स्टूडेंट्स लाइक दैट, बट एटलीस्ट आप लोग तो नहीं कर रहे हो ऐसा मोस्टली, है ना? सो इज द अर्थ releasing its own heat? And if earth was releasing its own heat for all those 4 billion years, what would have happened on the earth? Earth would have become energy deficient or energy poor. Has it happened? Has the earth cooled down? In those 4 billion years, earth has not even. So now, is the earth giving its own heat? No. Is the earth storing heat? What is it doing then? Just using heat the way you are. अर्थ का स्टेज आपका लाइफ का स्टेज है. कैसे? 100 आता है, 100 जाता है. जब तक रहता है गर्म रहते हैं. आ गया समझ में? अभी समझ में आया? ठीक है. और रखते कहां हो? पॉकेट में. तो अर्थ का पॉकेट कहां है? एटमॉस्फेयर में कौन सा गैसेस? जो ग्रीन हाउस गैस है वो क्या है? अर्थ का पॉकेट. जितना पॉकेट उतना पैसा रख सकते हैं. आया समझ में? राइट. सो सिंपल टू अंडरस्टैंड आई गेस. आ रहा है समझ में? सिंपल है ना? सो वेरी सिंपली सेड. नाउ लेट अस कम बैक. सी आई मेक ऑल दी स्टोरीज सो दैट आई कैन मेक यू पीपल अंडरस्टैंड. ठीक है. अगर ये मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल आपका अपना पैसा में नहीं देता तो शायद इतना जल्दी ये सब आपको नहीं समझ में आता. You know, that's why I always say, if you want to understand the situation, put yourself in that. खुद को घुसा दो. Right? Put yourself in those shoes and you will understand the situation. Very simple. You just have to imagine, real में नहीं डालना है. ठीक. ऐसा नहीं कि सर ये समझने के लिए कि ड्रग्स पी के क्या होता है, हम 2 ग्लास पी लेते हैं. ठीक है. होते हैं बहुत सारे इस टाइप के भी. सर सब कर डालेंगे ताकि हमको समझ में आए, पता चला लास्ट में जेल में पड़ा हुआ है. ठीक है. सब करते करते. सो बेसिकली यू जस्ट हैव टू थिंक थ्रू दैट. राइट. इफ यू जस्ट थिंक थ्रू यू विल गेट. एंड दिस इज वन प्रैक्टिस दैट वी हैव नॉट बीन टॉट. हमें ना लाइफ में इतना सिक्योर रहने की आदत सिखाई गई कि सोचना भी बंद करा दिया है. सिर्फ रटाते रहते हैं. रटते जाओ, सोचो भी मत. राइट. तो अगर आप सोचना शुरू करोगे आपको कोई सा भी सिचुएशन बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा. देन यू विल स्टार्ट लिंकिंग थिंग्स, एंड वंस यू लिंक थिंग्स यू विल अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन थिंग्स एंड द लॉज दैट अप्लाई. बिकॉज देयर आर अ फ्यू सेट ऑफ लॉज इन दिस होल यूनिवर्स विच अप्लाई इन डिफरेंट शेप्स. ठीक है. दो तीन टाइप का लॉज है. जैसे पॉजिटिव नेगेटिव है तो वही लड़का लड़की में भी काम करता है, वही मैग्नेट में भी करता है, वही इलेक्ट्रिसिटी में भी करता है. यू नो, वही हर चीज में करता है. ठीक है. वही इकोनॉमी में भी करता है, गिव एंड टेक. आपको बस वो पॉजिटिव नेगेटिव समझना है. डू यू गेट इट? सो इसी तरह ना कुछ लॉज है नेचर में. उन लॉज का एप्लीकेशन समझ जाओगे और इंटरलिंकिंग समझ जाओगे तो देन यू से अच्छा हाँ इसका अंडरस्टैंडिंग डीप है. कि किसी भी चीज को कहीं भी रिलेट करके अरे समझ. So this ability you gradually should be developing as you evolve. You are still evolving. If you think you have learned, let me tell you, इससे बड़ा गलती आप कुछ नहीं कर सकते. जिस दिन ये लगने लगे ना कि मुझे तो सब आता है, ये समझ लो मैं सही में बहुत बड़ा गलती कर रहा हूं. Right? And this is one thing that I learned in this process of UPSC. जब मैं सिर्फ इंजीनियरिंग करके निकला था, मुझे लगता था दुनिया जीत ली है.
ठीक है, मुझसे इंटेलिजेंट तो इस धरती पे कोई नहीं है। और उसके बाद यूपीएससी ने सिखाया, राइट, बिकॉज देन यू स्टार्टेड, देन सो दैट्स व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू, राइट। ये आपका वो मोमेंट है, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू ओपन अप। ठीक है, आपने चीजें इकट्ठी की हैं, अभी उसको यूज करना नहीं सीखा रियल लाइफ में, राइट। आपके पास इंफॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस नहीं है, राइट। आपने अभी इमेजिन करना नहीं शुरू किया, एक बार इमेजिन करना शुरू करो, फिर देखो कितना जल्दी, यू नो, यू हैव हर्ड पीपल मेकिंग क्वांटम जंप्स, है ना। आप बोलते हो ना यार मुझ में और उसमें बहुत अंतर है, ऐसा नहीं कि आप भी 11 घंटा पढ़े वो भी 11 घंटा पढ़े, वो डिफरेंस क्या है, थॉट प्रोसेस का। इफ यू ओपन योर माइंड, you know, start putting yourself in difficult situation, you know, I always say, people say sir बुरा समय चल रहा है, दुनिया में कभी भी बुरा समय नहीं होता, राइट, सिर्फ चैलेंजिंग टाइम्स होते हैं। so there are convenient times and there are challenging times, and when did you really learn in life? Challenging time. Challenging times are those moments which really teach you something. It is like going to the gym. Going to the gym is the most challenging thing that you do. But if you go regularly to the gym and do your exercise regularly, what will be the final outcome? Huh? Sir, we might get good body. That is a wrong statement. It's not might. You will definitely get a good body. You just keep going to the gym. सिर्फ जाते रहो और वहां जाके वो जो पेन है ना वो करते रहो. Go on taking that pain constantly. ठीक है, पेन इज द पार्ट टू ट्रांसफॉर्मेशन. उसके बिना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है लाइफ में. जितना पेन लेने की आदत ले लोगे, राइट, चैलेंजेस से टकरा टकरा के उतना स्ट्रांग हो जाओगे. और चैलेंजेस से बचते रहोगे, जो हमारे माँ बाप हमें बचपन से कराते रहते हैं, बचाते रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, वहां मत जाओ, यहां मत जाओ. मतलब ये नहीं है कि सारा उल्टा काम करना है, लॉजिक लगा के करना है. ठीक है, एंड हु विल टेल यू द लॉजिक? Who will tell or what will tell? Your inner voice. Your inner voice is the only way nature talks to you. नेचर आपसे सिर्फ दो तरह से बात करता है, आपके सामने होके या आपके इनर वॉइस से. जिसको हम इनर वॉइस बोलते हैं, इंट्यूशन बोलते हैं, इनर कॉल बोलते हैं, वो नेचर का वॉइस है. दैट्स योर पर्पस. समझे? राइट, सो स्टार्ट चेंजिंग योरसेल्फ स्लाइटली. जस्ट चेंज योरसेल्फ. आप हर रोज क्लास आ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट देयर आर मोमेंट्स इन लाइफ व्हेन यू रियली चेंज, राइट. और वो मोमेंट आने के बाद ना आप सीधा क्लिक करते हो फिर. सो यू जस्ट हैव टू, यू नो, समहाउ फाइंड योर दैट मोमेंट दैट मेक्स यू क्लिक, एंड दैट विल हैपन व्हेन यू मेक योरसेल्फ इंटरनली रेडी to hit hard against challenge. One thing that I learned in this process of UPSC was there are two paths always in life. One is easy, the other is, and which one should you take always? मेरा logic है tough. I never take a path which is normally easy. ठीक है, अगर मुझे easy है तो मैं फिर कैलकुलेट करता हूं इसके एंड में क्या होगा. अच्छा ये बन जाऊंगा, वो तो बनना नहीं है. अगर पहले ही पता है कि क्या बन जाएंगे तो फिर मजा क्या है? नहीं, कुछ भी करने का मजा तब नहीं होता जब आपको एंड रिजल्ट पता हो. मजा तब है रियल जब पता ही नहीं कि पहुंचेंगे कहां, है ना. बट ये पता हो कि हाँ कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे. दैट एक्साइटमेंट विल कीप यू गोइंग. ठीक है, तो यूपीएससी की तैयारी इसलिए मत करो कि बस एक रैंक आ जाए. इसलिए करो कि यार आप आईएएस बनने के लिए नहीं पैदा हुए हो. वो एक बहुत छोटा सपना है. ये जिंदगी एक बार मिली है, राइट. कुछ ऐसा कर लो कि लास्ट डे ना खुद को बोलो मजा आ गया. नहीं, जब भी लास्ट डे आए तो खुद को क्या बोल सके? मजा आ गया, कुछ तो किया यार, है ना. तभी तो रियल जॉय है ना.
इफ यू ऑलरेडी नो कि यार उस दिन जाकर के ना ये हो जाएगा, मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे होंगे, रिटायरमेंट का इतना पैसा आ रहा होगा, 2 बच्चे होंगे, वो एक यहाँ होगा एक वहां होगा, बीवी इधर होगी, सब कुछ तो पहले से ही पता है, मजा क्या है, फिर क्यों करना है? ऑब्वियसली ये सब होगा, राइट, बट रियल जॉय कहीं और है। ठीक है, आप लोग यंग हो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, बिकॉज आई हार्डली फाइंड पीपल रियली यू नो जॉयस नाउअडेज। आजकल सबके ऊपर इतना लोड है ना लाइफ में, आधी लाइफ बर्बाद दिखती है आप लोग के एज से ही मुझे तो, एंड दैट्स नॉट हाउ यू आर सपोज टू लिव, दैट्स नॉट, एंड आई एम नॉट सेइंग डोंट डू यूपीएससी, ठीक है, ऑल आई एम सेइंग इज डू इट इन सच अ मैनर कि आपको मजा आ जाए, दूसरे के लिए मत करो, आपको रैंक नहीं लानी है, आपको खुद को आउट परफॉर्म कर देना है, कुछ ऐसा कि आप बोलो ऊपर पहुंच के यार मैंने तो सोचा नहीं था मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा। नहीं, सिर्फ रैंक का सोचोगे तब तो फिक्स्ड है, बट कुछ ऐसा कर लिया कि तो फिर आप आगे आगे फिर भागना शुरू हो गए, फिर उस दिन आपकी लाइफ स्टार्ट होगी। अभी क्या है, आप एंड रिजल्ट सोच के बैठो, आईएएस बन जाए बस, आईएएस बन जाए बस से कुछ नहीं होगा, आईएएस बन जाए इज जस्ट द ट्रेन, यू जस्ट कैच द ट्रेन टू अ डेस्टिनेशन, ठीक है, सो फिगर आउट योर डेस्टिनेशंस इन योर हेड, राइट, एंड वर्क फॉर दैट। लाइफ का रियल जॉय यही है, अंडरस्टैंडिंग योर पोटेंशियल, अंडरस्टैंडिंग योर कैपेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग मेरा इंटरनल कॉल तो ये है और ये मुझे करना है समहाउ, ठीक है, आप सबका कॉल है आईएएस बनना, and I'm saying that's perfectly fine, there's nothing wrong in it, it's one of the toughest things that you can do, and that's what you've chosen, so you've already chosen to hit your head against something big enough, है ना। बस अब ये है कि इसके अंदर अभी क्या है, जब आपको बहुत सारे लोग बोल देते हैं ना दिस इज बिग इनफ बिग इनफ बिग इनफ, तो क्या होता है, फिर आप डर जाते हो, यार ये तो सही में कुछ ज्यादा ही बड़ी चीज से पंगा ले लिया, है ना। हैव यू हर्ड द स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स, एक बार दो दोस्त थे, दे बोथ ऑफ देम वेंट टू अ वॉर, right, I don't remember the names, so this is a English, I think it's a English story, classical story or something. Both of them went to a war and both of them saw a very big giant coming toward them, very huge giant, ठीक है। अब दोनों का एटीट्यूड देखो, one of them said it is too big to be hit, इतना बड़ा इसको कैसे मारेंगे, राइट, इसको तो मार ही नहीं पाएंगे। the other one said इतना बड़ा इसको तो मिस ही नहीं कर सकते, कहीं भी मारेंगे इसी को लगेगी, है ना। सो इवन इफ वी डोंट एम एंड स्टिल वी कीप शूटिंग, वील हिट हिम समवेयर, है ना। सो वी जस्ट हैव टू कीप शूटिंग, वो खुद ही मर जाएगा। सो दिस इज हाउ यू अप्रोच थिंग्स, राइट। सो थोड़ा सा ना मतलब हीट बजट पे वापस आ जाते हैं, ठीक है, हीट बजट पढ़ाना मतलब आई एंजॉय डूइंग दिस, बट आई इन दीज थिंग्स ओनली, एंड नेचर ओनली टीचेस यू ऑल दिस, यू नो, ये सारा चैलेंज लेने का कैपेबिलिटी आप में ऑलरेडी है, नेचर आपको ये सिखाएगा, आप जितना ज्यादा नेचर को समझना शुरू करोगे आपको उतना नेचर ये सब सिखाता है, यू नो। यू कम टू अ स्टेज वेयर यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार मतलब यू सीरियसली स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार मुझ में कैपेबिलिटी तो बहुत ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इस पूरा यूनिवर्स में मेरे जैसा तो कुछ बनाया ही नहीं यूनिवर्स, है ना। आपके जैसा कुछ बनाया कभी देखा अपने जैसा कोई और, उसके बाद भी डेरोगेटरी फील करते हो, ओहो शिट मेरे जैसा कुछ बनाया ही नहीं, कोई तो बना दिया होता, है ना। ये आपका स्ट्रेंथ है कि आपके जैसा कुछ नहीं बनाया, ठीक है, तो उसको यूटिलाइज करो, एंड टाइम इज ऑल्सो लिमिटेड, ज्यादा टाइम है नहीं, गिवन ही है, राइट। तो थोड़ा सा और मोटिवेशन चाहिए, थोड़ा मतलब यू जस्ट हैव टू गो ऑन एंड देन रीड ऑल्सो, रीडिंग इज वन थिंग दैट ओपन्स, एंड डोंट रीड ओनली वन थिंग, रीड डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ। एक टाइम पे ना 3-4 बुक पढ़ने की कोशिश किया करो, अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग। एक ही पेज पढ़ो, 2 लाइन पढ़ो, 4 लाइन पढ़ो, दैट्स परफेक्टली फाइन। इफ रीड अप टू दैट लाइन स्टार्ट्स मेकिंग यू थिंक, मैं बुक वहां बंद कर देता हूं जब वो लाइन मुझे सोचने पे मजबूर कर देती है, देन आई क्लोज दैट बुक एंड आई स्टार्ट थिंकिंग कि वो बोल क्या रहा है,
राइट. सो आई डोंट रीड थ्रू द बुक. मेरे को एक एक बुक खत्म करने में 1.5 साल लग जाता है, बिकॉज आई एम रीडिंग 5-6 बुक्स साइमल्टेनियसली. दैट्स परफेक्टली फाइन. आई एम नॉट इन अ हरी टू कंप्लीट बुक्स. अगर वो बुक से सीखा नहीं तो पढ़ के क्या फायदा है? फिर तो वही है ना जो आप मतलब हम लोग करते हैं, एनसीईआरटी रट डाला, पूरा देख लिया, हाँ सर सब कुछ देख लिया, आया कुछ समझ में नहीं. ठीक है, तो जहां रुक जाओ वहां रुक जाओ, फिगर आउट द वेव. अच्छा ये आगे क्या बोलना चाह रहे हैं, राइट. सो गुड. नाउ coming back to this heat budget thing. So why I said all this was because we generally don't look for examples in real life. जैसे ही you come across something that you don't understand, try to figure out something equivalent to that. वैसा कोई और situation सोचो. That situation might give you the answer. When you start comparing, and gradually you will develop this ability to compare through and see through. Pattern दिखना लगेगा आपको लाइफ में. समझते हो pattern? Right, and figuring out pattern is the biggest thing. If you are able to figure out pattern in things, then you will understand कि यहाँ पे कौन सा law चल रहा है, and then you will understand where is it heading. ठीक है, तो किसी भी चीज में पैटर्न देखने का कोशिश करो और पैटर्न समझने का कोशिश करो. किसी का बिहेवियर में पैटर्न, किसी भी कॉन्सेप्ट में पैटर्न, सब चीजों में पैटर्न होगा, उसके बिना होता नहीं है कुछ. द मोस्ट रैंडम थिंग्स हैव द मोस्ट इंट्रिकेट पैटर्न्स. ठीक है, दे लुक रैंडम बिकॉज वी हैव स्टिल नॉट बीन एबल टू क्रैक द पैटर्न देयर. राइट, डू वी गेट इट? ओके, सो नाउ कमिंग टू दिस हीट बजट थिंग. सो बेसिकली व्हाट वी अंडरस्टूड वाज, अभी 2 मिनट फिर से इस पे वापस आ जाते हैं, ये तो हो ही जाएगा, राइट. एक क्लास ऊपर नीचे डजंट मैटर, बट अगर आपने लाइफ नहीं चेंज किया इन सब के बाद भी, तो फिर एक और अपॉर्चुनिटी ऐसे ही चली जाएगी, राइट. So coming to this heat budget, as I again say that the earth does not, it neither stores energy nor releases its own energy, still gets energy and releases energy and remains warm. जैसा आप रहते हैं, जो हमने समझा, ठीक है. Which also means now, अब इसमें हम बजट वर्ड क्यों यूज करें? क्योंकि आपका अपना एक बजट है ना. What is your budget? आपको पता है मेरा इतना बजट है, इतना मंथ में आई गेट दिस मच मनी एंड दिस मच मनी आई स्पेंड, एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ माय मनी इज कंप्लीटली स्पेंट. ठीक है, सो ईच ऑफ यू हैव अ बजट. व्हाई? बिकॉज यू आर रिसीविंग समथिंग एंड यू आर स्पेंडिंग समथिंग. सेम वेज, नाउ दैट यू नो दैट द अर्थ इज ऑल्सो डूइंग दिस, अर्थ विल ऑल्सो हैव इट्स बजट. किस चीज का बजट? हीट का बजट. सो अर्थ हैज अ हीट बजट. ठीक है, एंड इन द अर्थ हीट बजट, is it storing money or producing its own money? No. So is it storing heat or producing own heat? No. It is utilizing the heat of sun. ठीक है, so if this earth is getting 100 units of heat, if it is getting 100 units of heat, by the end of the cycle it should have spent 100 unit. Do you get it? So earth का जो heat budget है वो कैसा है? इकोनॉमी थोड़ा हुआ है आपका? नहीं. अच्छा, इकोनॉमी में ना there are 2-3 types of budgets, right, in terms of a surplus budget, a balanced budget and a deficit budget. What is a deficit budget? When you spend more than what you get. What is surplus budget? You get more and you spend less. And what is balanced budget? Equal. Right, so what is Earth's budget now? Balanced budget or equal budget. So Earth's heat budget is a balanced budget, which means if the earth is getting 100 units, it is also spending 100 unit. Simple. Are you समझ में? So if the earth is vertically getting 100, earth is also vertically sending out 100. Until it is keeping that 100, it is warm. ठीक है, जब तक वो 100 उसके पास है तब तक वो warm है, बट जब वो 100 खत्म होता है तब तक नेक्स्ट 100 आ जाता है, क्योंकि सन तो हमेशा भेज रहा है, जैसे आपके पेरेंट्स हमेशा पैसा भेजते रहते हैं, वैसा ही साइकिल है. सिंपल. ठीक है, सो राइट, सो any 100 coming will stay with you for some time and then it will go, but by the time that 100 goes, the next set of 100 comes in, right? That's why the earth always has some heat. The same ways as you neither earn money nor spend your own money, but you always have some money with you,
है ना, ये वैसा है exactly. ठीक है, okay. Now the next part. So once we understand this, the heat budget, which is vertically balanced means vertically whatever amount we are getting, the same amount we are vertically spending also. ठीक है. Now if that is done, then हाँ जी बोलो, कोई डाउट है? हाँ वो सब है, बहुत माइनर है, वो उतना नहीं होता. When you compare it with respect to the whole earth, energy released by any other process is not that much. It is very negligible. ठीक है, when you think of the whole earth. All right. So now coming back, obviously it is there, but it is negligible. In atmospheric heat budget, we don't talk of that. ठीक है. Then coming to next. So once if the vertical heat budget is balanced, now let me ask you the second question. And because by now you know this, everyone understand that in the tropical mid-latitude regions, tropical and mid-latitude, what is tropical region? Up to 30 degree. What is mid-latitude? Up to 45, 50 degrees, something like this. We know that in the tropical mid-latitude region, the sunlight always keeps coming, right? Round the year there is sunlight, hence round the year sunlight is coming, okay? And that region is relatively warm, right? Whereas you have the polar subpolar region also. That region receives sunlight for 6 months only. Remaining 6 months there is no sunlight or very less sunlight. So that region is receiving less sunlight. Do we get it? Okay. So that is receiving less, right? Now if that is the case, so this region is receiving less and the other region is receiving more, and the other region is warm and the one region is cold. Okay. So एक तरफ का region warm है, दूसरा तरफ का region cold है, right? I hope this much is understood. Do you think the region which is not receiving too much light will not release light, not release heat also? Now this is where you have to learn one rule of nature. What is that rule of nature? Irrespective of its temperature, every object releases heat. ठीक है? There is no object in the universe which does not release heat even if it is very cold. So this is a law of nature. ठीक है? What is the law? ये हमारा law of thermodynamics के मतलब when you read thermodynamics you will understand this, that every object irrespective of its temperature releases heat. That means even a snow surface in the cold night will release heat. ठीक है? So if the snow surface in the night is releasing heat and in pole you have 6 month night, so where is it getting that heat from? One, that it got in the first 6 and that region is not becoming extremely cold, है ना? So tropical regions are warm and polar regions are cold, but that region is not becoming extremely cold, so it must be getting heat from the warm region. आ रहा है समझ में? So on the earth we have this process. What is the process? That heat from the warmer regions travels to colder region. So if you see the sunlight, basically how is it going? Suppose this, my hand is the earth surface and this is the naked part is the tropical region and this woolen part is the frozen region. So how is the heat going? There is more heat coming in this region. Then this heat is going to the colder region and there is relatively more heat going out from the colder region. So heat is coming, more heat is coming in here. It is not that it is not going out. It is going out also, but more heat is coming in. So if 100 is coming in, only 80 is going out. Okay, and 20, where does the 20 go? It is traveling to the colder region. And in the colder region, what is happening? If 40 is coming, 60 is going out. So it is not that overall it is releasing more than the tropical. Tropical was releasing 80 and this is releasing only 60. But that 60 is more than what it is getting. So where is it getting the remaining 20 from? Heat transfer. So this heat is being transferred. Through what region will it get transferred? It is getting transferred in the atmosphere. Because something moving has to move the heat. Heat अपने आप तो जाएगा नहीं. So you need something moving. So what is moving on the earth? One is the atmosphere. There is movement. Second, water body. Water bodies are moving, such as ocean. So in the ocean there is movement.
So ocean movement and atmosphere movement, what are they doing? They are basically transferring heat. Do we get it? So basically all the movement, and movement के लिए आपको energy चाहिए, and what is that energy? The heat energy. ठीक है? So all the movement in the atmosphere is basically happening because of energy, and that energy is creating the movement. So energy makes things unstable. It moves. It goes to the colder region. There it becomes stable. When it becomes stable, it is releasing that heat. ठीक है? तो what do you get to see? Only the movement. But basically what is happening in that? Heat transfer. आपको सिर्फ movement दिख रहा है कि हवा जा रही है. Yes, something is moving. But actually क्या हो रहा है? Heat transfer. ठीक है? जैसे आपका कॉलोनी में अगर किसी को नहीं पता है तो उसको क्या दिख रहा है? ये पढ़ रहा है या पढ़ रही है, लेकिन हो क्या रहा है? आईएएस की तैयारी है ना? आ रहा है समझ में? ठीक है, राइट? सो एटमॉस्फेयर में भी ऐसा ही हो रहा है. दिखता क्या है? मूवमेंट. हो क्या रहा है? हीट ट्रांसफर. डू वी गेट इट? सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉजिंग द मूवमेंट्स इन द एटमॉस्फेयर? What is causing the movement? What goal of the nature is creating movement in the atmosphere? There is a goal. Everything that happens in the nature has a goal. Without a purpose, nothing happens in nature. ठीक है, ये नेचर का एक और रूल है. विदाउट पर्पस नेचर में कोई भी वेस्ट नहीं होता. नथिंग. इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी वेस्ट. दैट्स व्हाई इट इज सस्टेनेबल, एंड दैट इज द बेसिक लॉ ऑफ सस्टेनेबिलिटी. If you want to be sustainable, stop producing waste. अगर थोड़ा भी वेस्ट प्रोड्यूस किया तो समझो वो नॉन सस्टेनेबल है. राइट? दिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट सस्टेनेबिलिटी. राइट? दैट, एंड हु टेल्स यू दिस? आप मेरे को दिखाओ नेचर में कहीं पे भी वेस्ट दिखा दो जो नेचर का वेस्ट है. आपका वेस्ट है, घर में डस्टबिन में पड़ा रहता है, या बहुत सारा चीजें जो कि अपने आप रिसाइकल नहीं होंगी. बट नेचर में मुझे ऐसा कुछ भी दिखा दो. Anywhere in this universe, show me one thing. Go back, search, figure out and tell me. You will not find even an iota of waste created by nature. इतना बड़ा सिस्टम में नेचर iota of waste भी नहीं क्रिएट करता है. You get it? And that's why nature is sustainable. Right? So coming back. So what did we understand? That the movements are mainly transferring heat. And what do we see those movements as? वो आपको कैसा दिखता है ये बताओ. What kind of movements have you seen? You tell me what you have seen. So what movements in the atmosphere have you seen? Give me the names. नाम चाहिए मुझे. Wind. So wind. What else? Leave the oceans. Precipitation. कुछ movement है ना? तो precipitation वो किससे होता है? Cloud. Have you seen cloud? Have you seen clouds moving? क्लाउड मूव कर रहे हैं ना. आप बोलते हो देखो क्लाउड जा रहा है, वो जा क्या रहा है? एनर्जी. ओ यार ये क्या हो गया, है ना? ऐसा मूवमेंट होना चाहिए. यस यार ये तो सोचा ही नहीं था, ये असली में तो कुछ और ही ले जा रहा है. ठीक है, हम तो सोच रहे थे, है ना? राइट? दिस इज व्हाट द स्पेनिश डिड टू द सेंट्रल अमेरिकन्स. इन सेंट्रल अमेरिका there used to be a lot of gold and they didn't know the use of gold. उनको गोल्ड का पता नहीं था इसका करना क्या है. So Central Americans, when they went to colonize that part, those people, local people asked, what do you do with this rubbish? किस काम का है? The answer they got was, this metal help us cure a disease that people in our land have. What was that disease? Greed. ठीक है. तो उनको समझ में नहीं आता था ये करते क्या है इसका. वो तो अपना ग्रीड सेटिस्फाई कर रहे थे. ठीक है, तो वही नेचर में होता है. राइट? सो नेचर इज बेसिकली, सो गिव मी मोर नेम्स. और नाम चाहिए मुझे, इतने पे नहीं चलेगा. क्लाउड, प्रेसिपिटेशन, विंड्स, और चाहिए इवेपोरेशन और कॉन्डेंसेशन. और यार फिनोमेना बताओ, नेचर में इतना कुछ देखा है. 21 साल तो कम से कम गुजारे ही होंगे. साइक्लोन्स, वेरी गुड. व्हाट एल्स? टॉर्नेडो, सुनामी. सुनामी एटमॉस्फेयर में. थंडरस्टॉर्म, वेरी गुड. सो थंडरस्टॉर्म और
lightning, hailstorm, ये सब क्या हो रहा है? अब समझ में आया? This is nothing but all heat transfer. That's it. Right? Every phenomena that you see in the atmosphere is driven by the heat energy, and hence it is doing something as simple as heat transfer. So once you understand the heat transfer process in atmosphere, you understand climate and weather. Okay? So this is what we have to do. So this is basically, by this heat transfer, what is it creating in the atmosphere? It is creating weather phenomena. And when you put those weather phenomena together, you call it as climate. So that's how your climate and weather is created. Okay? So once you understand in which region what phenomena is happening, you will understand the weather and climate of that region. That's it. इतना ही करना है. ठीक है? So this is the whole process. So इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं vertical heat balance. Just spend 2 more minutes, complete this cycle and then go. So vertical heat balance, from this we get heat transfer between regions. ठीक है? Horizontally and vertically. Right? And this creates what? Different atmospheric phenomena. Atmospheric phenomena such as, दो चार नाम लिख लो, such as winds, rains, snowfall, cyclone. ठीक है? टॉर्नेडो. कुछ बड़ा फिनोमेना बताओ इंडिया में होता है. वेरी गुड. मॉनसून. ठीक है? ये सब है क्या? These are nothing but, this is collectively what you call as weather and climatic phenomenon. And understanding these phenomena in different regions, we understand weather and climate in different regions. ठीक है? So different regions, therefore weather and climate in different regions. ठीक है? That's it. यही cycle है. तो यही हमको पढ़ना है. So how the heat is transferred, how the weather phenomena are created, how the climatic phenomena are created, where they are created. So how will they create the regions, climate and weather. That's it. हो गया इतना. Alright. Is this much understood? So this is the whole picture. This is basically understanding the purpose of what you are reading. ये हो क्या रहा है? Now you understand the purpose. Now you just have to read those finer points. तो अब क्लास के अंदर अगला जितना भी है उसमें हम वो फाइनर पॉइंट समझेंगे. ठीक है? ऑलराइट. सो नेक्स्ट क्लास व्हेन डू वी हैव? कल तो आपके साथ क्लास नहीं है ना? ठीक. सो व्हेनेवर वी हैव द नेक्स्ट क्लास वी विल कैच अप फ्रॉम देयर. ऑलराइट. दैट्स इट. थैंक यू सर. एनीथिंग एल्स? नो सर. जूम आउट द स्क्रीन. सो दिस इज द zoomed out screen. Thank you everyone. That's it. Online people also, class over. Abhi I've zoomed out. If you want to write something, write down and then that's it.